charged electrode, and cathode is actually negative charged, and electrolysis is actually the passing of electric current through an electrolyte. Electrolysis, and from this electrophoresis has been derived, and see, this is the electrophoresis apparatus, and on one side there is one electrode, and the other electrode is on the other hand, on the other side, like here, and downside is the other electrode, and we will load, and these are the wells. These are wells. Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wells are there, and we load samples in these wells. These purple color is sample. So sample is loaded into the wells, and there is a buffer. The buffer is in the solution, and in this tank, and this buffer actually, this is a media for the electrolysis. And now when the current is passed through the sample, the move into the sieve elements into the pores of the gel. This is actually a gel, and this move into the gel, into the pores of the gel slowly, and it separates the different sizes through different sizes. And if you can see, if this is sample number 1, it has multiple bands, so it will have multiple size of protein. If this is protein, so there are multiple size proteins, and you can see there are multiple size proteins. If you can see now, more important thing we can do is, if we compare these two proteins, so that means that is the sample has different proteins than this sample. You can see this protein is same. It looked like they share, these three are this one, this sample, and this one. So they share the same size protein, and similarly these samples share same size proteins, like bands, size bands, or they may be either proteins most probably, and here they share the same size proteins, and so on. So if there is a ladder, so there is no ladder here, we cannot size these protein. If there is a ladder, so we can comparatively like say the size of the protein. Okay, so next is if we compare, if we say, if we pour a sample, and it move into the gel, and so there the larger fragment will be here, so it moves slowly. The larger fragment will move slowly through the pores, and the smaller fragments will move faster, and that will be at the end of this gel, so and so on. And the rest is like okay, and this is the plastic frame, and that's it. Next is इसकी समझ आ गई सबको? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and next is electrophoresis is a method whereby charged molecules in the solution, mainly proteins and nucleic acids. So proteins are actually charged molecules. Nucleic acids, including DNA and RNA, they are charged molecules. So electrophoresis is the application of electricity. So and that is the method by which charged molecules are separated, and they migrate in response to the electric field. And the charged molecules we deal with are proteins, DNA, and the RNA. And the rate of migration through the electric field depends on the strength of the field. Means it will depend on the current, it will depend on the voltage, it will depend on the power. So current, voltage, and power, so they are determinants for the migration. So the more these determinants are of the field is, the more the rate of the migration will be. So it will move faster if the current is more, or voltage is more, or power is more. And the net charge, so if that is so the net charge will affect the rate of migration. Similarly, size and shape of the molecules, so that also matters. And similarly, ionic strength and viscosity,
ionic strength and viscosity also matters. Similarly, temperature of the medium in which the molecules are moving. So if the temperature is more, if that rise there, so it affect actually the electrolysis actually. And viscosity is actually the measure of fluid resistance to flow. So the more viscosity, it will resist. It will so it will the resistance will occur, and the fluid will face resistance in flowing through the gel, and is simple and straightforward and highly sensitive technique, and actually rapid. And next is two basic electric equations are there, are important. And the first one is I is equal to ER, and the second one is P is equal to EI. And I is equal to E by R. Actually, that's inverse proportion. I is inverse proportion to the resistance actually. So I is actually the current, E is actually the voltage, and R is resistance. P is actually the power, and E is actually the voltage, and we already discussed that thing. And I is actually the current. So it can also be, so P is common. P can also, the E is common in both. So E will be equal to I divided by R. So if we express that into P, what is the power? So so the P will be equal to I square into R. So the P can be written in this way as well, derived from these two equations. And wattage is actually, so the P is the power or wattage. So wattage is actually the amount of electric power expressed in watts. So the power is, when expressed in watts, will be wattage. And power, what is power? It is the rate at which work is done. So the work done per time. So that will be the power. And voltage, this E is voltage. So voltage is the pressure of an electric circuit power source that pushes the charged electrons through a circuit loop, enabling them to work, such as illuminating a light. So it is actually, voltage is the pressure. Actually, it's the pressure of electric circuit. And in brief, voltage is equal to pressure, and it is measured in volts. And next is the current is the flow of electric charge carriers, usually electrons and electron deficient atoms. So actually the flow of electron will be the current. So these are different terms that is used in there. And in electrophoresis, one electrical parameter, either current, voltage, and power. One of these will be held constant in electrophoresis. So make it constant, like either power, voltage, or current will be held constant, and the rest will be done. Okay, so under constant current condition, if the current is constant, so velocity is directly proportional to the current. So and the velocity of the molecule is maintained, but heat is generated. So when current is at constant current condition, so when current is constant, velocity will also be maintained. That will be constant then, but heat will be generated. Heat will be more, and the more the heat is difficult. So the more will be the resistance in the way of the electrophoresis, the movement of the proteins or any charged molecule like DNA and RNA. So heat is actually, this is discouraged in the electrophoresis. So under constant voltage conditions, the velocity is slow. The velocity is slow. So it means the velocity is slow. So that means the movement of the electrophoresis will be slow, but no additional heat is generated. So heat will not be generated in that case. And under constant power conditions, the velocity slows, but heat is kept constant. So heat will be constant. Heat will not move, will not change. So this is how
we can relate resistance, voltage, current, and power. And this is also actually relevant to the electrophoresis actually, and we need to know, yeah, a little bit about these things as well. And electrophoresis actually analytically it can be used analytically to study the properties of a single charge species or a mixture of molecules. So for what purpose we use electrophoresis? To study the charged molecules, so and their properties actually, and preparatively as a separating techniques. For example, before like we can use electrophoresis before some analysis, like we're gonna go for mass spectrometry analysis of proteins. So before going into mass spectrometry, we will do electrophoresis, or before restriction ligation in the cloning experiments, we can go for electrophoresis, because we need to know the size of the proteins or the size of the size of the DNA or RNA. So and actually the size of DNA before DNA restriction ligation in the cloning experiment. So in the preparatory steps, electrophoresis is used for analysis of the properties of the charged molecules. Electrophoresis is used, can be used. And what actually mass spectrometry is, so it is used to measure mass to charge ratio of ions. So it is in itself another technique, and we will be covering this technique as well. But later on, we cover these basic things, then we'll be going for mass spectrometry as well. So mass spectrometry is the measure of mass to charge ratio of ions. And so electrophoresis is usually done with gel formed in tubes. So electrophoresis can be done in tubes or capillary. So for example, so DNA in the sequencing and proteins, and they can be done in at isoelectric focusing. What actually isoelectric focusing is? So isoelectric focusing is a method of separating proteins according to their pi, means the isoelectric point. And if you know the pH, how it changes at a stage, a point comes where the molecule has both positive and negatively charged equal. They have equal charged, and they have and so they are neutrally charged. So they are neutral actually. So at that point is isoelectric point. So isoelectric focusing is a method of separating proteins according to their isoelectric point in a pH gradient. So the gradient in the pH gradient, so isoelectric at isoelectric point accordingly, so the proteins can be separated. So isoelectric point is defined as the pH at which the protein carry no net charge. सो नेट चार्ज मीन्स चार्ज तो होंगे दोनों, बैलेंस होंगे, तो बैलेंस होने की वजह से नेट चार्ज जो होगा दैट विल बी zero, or pH at which the protein become immobile in an electric field. So when we apply charged, means the electric field, positive and negative electric field. So the charge, the electrodes. So when electric field is applied, so the molecule will not move in सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? ये सर अब अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर अभी। ओके, सो कब से नहीं आ रही थी आवाज? सर बीच में बस थोड़ी एक लाइन आपने बोली है, एक दो बार लाइक की थी बस। चलें ठीक है। So basically what I talked about is सर अभी नहीं आ रही है। and that सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं आ रही आवाज। यस सर आवाज नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। Okay, and इसका मतलब है स्लाइड भी शेयर नहीं हो रहा होगा। Yes, sir. यस सर, अभी स्लाइड नहीं हो रही। So now it's okay. So what I'm talking about is electrophoresis is actually done using gels formed in make gels in the capillary tubes. We use gels that are present in the capillary tubes. Capillary are the tubes, so and they are actually based on isoelectric focusing, and or we can use electrophoresis in the slabs, and the slabs could be horizontal or vertical. So the horizontal or vertical slabs can be used. The tubes, capillary could be used for electrophoresis. And what next is, if you can see, this is actually a capillary electrophoresis, and in the capillary electrophoresis, there are two tanks, and one has the cathode, the other one has the anode, and the cathode and anode, they are like the voltage supply, power supplies here. And the capillary has, so there is a detector, and the protein or the charged molecule will move through the capillary through the gel, and that is actually capillary gel, tube gel. And this is through isoelectric focusing. We will be talking about this in detail later on, the isoelectric focusing and something. So these are the bands, these are the peaks of the separation, that are separated, and the proteins are separated at different levels. We will be talking about that in detail. Don't you worry for that. In many electrophoresis units, the gel is mounted between two buffer chambers. So the gel is mounted between two buffer chambers. These are the buffer chamber and 1 and 2, and containing separate electrodes. These are separate electrodes that they are containing with, so that the only electrical connection is, and that's it. So this is capillary electrophoresis, and this is actually this definition is actually for normal electrophoresis, for every electrophoresis, for common electrophoresis actually. And the capillary electrophoresis is meant for specific like types of settings, like for like sequencing. We do capillary electrophoresis, and for some other, like we have some technologies like Agilent technology. So Agilent technology, they have capillary electrophoresis. I will write it right for you. Agilent. Okay, and they do have capillary electrophoresis. They do have PCR, and and the capillary electrophoresis. And they actually some of them have virtual electrophoresis actually. They have. And next is, so that is a flat bed unit. So that is horizontal. The previous one was capillary, and now we are talking about the flat bed unit, the horizontal type. So in the horizontal type, usually DNA is used, DNA and RNA are run, and you can see the positive electrode, the negative electrode, the positive electrode, they are there, and the buffer solution, and the buffer in the blue color has been shown, and the tank in the black color, that is the tank, and the electric field, the direction of migration, so that will be from negative to positive. And as DNA is negatively charged, so it will move toward the positive
charged, so it will move in this direction because the DNA is negatively charged. So, and this is the sample loading into the well. So the sample are loaded in here, and it will move into the gel towards the anode, and that's it. And this is the side view. This is the side view actually, and this is the upper view. You can see this is the apparatus. So these combs are there. Combs are then removed, and we get these wells actually, and that's it. And there are two electrodes, the red one and here the black one, and that's it. So this will be the negatively charged, and this will be the positively charged, and that's it. And next is slab unit vertical. The higher the negatively charged density. So again, let me describe the figure first. So these are this is the same figure which we have seen in the on the first slide. So high molecular weight protein will be here, and these are the electrode. Low molecular weight proteins will migrate faster, and that will be here, and these are the wells, and larger fragments are here, smaller fragments, and this is the direction of protein migration, because the proteins are heavily like they have high molecular weight, and so we will need two things. First is the charge, the field, the electric field, and the second one is the gravitational force. So this is the vertical setup, and this one is the horizontal setup. So DNA and RNA are there, they have low molecular weight, so they can move through the electric field. But for proteins, we need extra effort of the gravity, so we will make it like horizontal, also vertical, and through the vertical pressure of the gravitational pressure, that can be separated, the proteins can be separated. So the higher the negatively charged density, the faster a protein will migrate. So negatively charged, अगर negative charge जितना ज़्यादा होगा, so this is the negative electrode, so it can move faster toward the positive pole. So the more the negative charge, the faster the protein will move. And next is like what? Proteins, however, are not negatively charged. So proteins, they have negative and positive charge. They depends on their amino acid constitutions. So the ionic detergent and detergent SDS. So what is the alternate? What we can do is to use SDS, sodium dodecyl sulfate. So the detergent, ionic detergent SDS can denature. We will use this SDS, and this SDS, what SDS do? It actually denatures and binds to proteins and make them uniformly negatively charged. When the proteins are they are transformed into negatively charged proteins by using the SDS, now it can move easily in the electric field from negative to positive charge. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन एक्सप्लेन करेगा अभी तक जो हुआ है? Come on, you already studied this in your practicals as well. Who will explain? Amna? Anaya is here. Anaya? Yes, sir. Can she बताए? सर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास बेसिकली ये डीएनए या फिर प्रोटीन्स या फिर आरएनए वगैरह को ना उनके सेपरेशन के लिए मेथड यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वेट। और इसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है, उसके अंदर बफर सोल्यूशन होता है, और जिसके ऊपर जो वेल्स बने हुए हैं जैसे यहाँ पे, इसके अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं जो कि डीएनए या फिर प्रोटीन्स जो भी हो सकता है। और ये जो चैम्बर है इसकी एक साइड पे इलेक्ट्रोड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और दूसरी साइड पे पॉजिटिवली चार्ज वो होता है।
और इसमें क्या होता है, जब हम जो डीएनए होते हैं वो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जब हम अपने सैंपल को लोड करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वो फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें जितने ज़्यादा साइज की बेसिस पे अगर उनका लार्जर साइज होता है तो वो स्लोली मूव करते हैं, और अगर उनका स्मॉलर साइज होता है तो वो जल्दी मूव करते हैं और टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसमें हमारे पास एक मार्कर होता है, या फिर जिसको हम जो हमें ये बताता है, स्टैंडर्ड होता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि अगर डीएनए यहाँ पे मतलब के मूव करना स्टॉप कर गया तो उसका साइज ये है, उस मार्कर से हम वो उसको पता कर लेते हैं। और अगर प्रोटीन्स की जबकि बात होती है तो वो हमें पता है कि वो नेगेटिवली भी चार्ज नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम एसडीएस ये जो डिटर्जेंट होता है वो यूज़ करते हैं, जो उनको नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर मूव करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वो फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं ये इसमें। और आपने सर पीएच का बताया था, जो हमारे पास ये जो बफर सोल्यूशन होता है इसमें उसकी जो पीएच होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट पीएच होती है। और जो सैंपल मूव कर रहा होता है ना, जब वो ऐसे रीजन में चला जाता है कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है, तो वो वहाँ पे इमोबिलाइज हो जाता है और वहाँ पे वो स्टॉप कर जाता है, जिससे हमें पता चल वो अपनी पीएच की बेसिस पे वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाते हैं। Okay. So and what next? क्या कोई चीज रह गई, कोई बात रह गई हो इसमें, कोई पॉइंट? So we'll explain. SDS अनाया SDS क्यों यूज करते हैं? सर क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस होती है वो होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज। तो हम इस वजह से एसटीएस डिटर्जेंट को यूज करते हैं, जो कि प्रोटीन्स को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं ताकि वो फिर मूव करें टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ग्रेट ग्रेट, ठीक या है। फिर सर अगर हो गया। प्रोटीन्स का अगर उनके जैसे कि स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेकेंडरी टर्शरी वगैरह, तो इसकी उसको लीनियर बनाने के लिए भी हम वो बीटा मार्सेप्टोएथेनॉल वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो सिर्फ साइज की बेसिस पे ही सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, बीटा मरकैप्टोएथेनॉल यूज करते होते हैं, बिल्कुल इसी तरह है बाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है। सर उसके अलावा स्टेनिंग और ओके, डीस्टेनिंग का भी है। हाँ वो आगे ये सारी चीजें डिटेल से आ रही हैं। फिलहाल अगर हम एसटीएस को वो कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल्स में आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह। स्टेनिंग डी स्टेनिंग भी है, लेकिन दैट इज लेटर ऑन वी विल बी कवरिंग। ठीक हो गया। Who will explain, like Fareen? Yes, sir. सर ये एक्सप्लेन अभी तक करो जो उससे हुआ है आपसे। you in your own words. ओके सर। जी, सर अभी अगर तक जो हुआ है like in your own words. सर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपने बताया कि माइग्रेशन होती है चार्जेस की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब उसमें जो है हमने डिफरेंट मतलब के प्रोसीजर पढ़े हैं और पहले तो हमने पढ़े रेट ऑफ माइग्रेशन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और कितना नेट चार्ज है और क्या साइज और शेप है उस मॉलिक्यूल का और क्या विस्कोसिटी और क्या टेम्परेचर है उस मीडियम का। और सर भी हमने इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस पढ़ी हैं, उसमें सारा कुछ पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट रख दें तो क्या होगा। और सर उनकी एप्लीकेशन पढ़ी है कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्यों हैं, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स। और जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। और सिर्फ जो सेपरेटिंग टेक्निक्स होती हैं उनसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और इसके अलावा जो है हम ये कर किस में कर सकते हैं, तो सर इसमें आपने बताया था कि कैपिलरी ट्यूब्स में कर सकते हैं, और स्लैब्स में, जो स्लैब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होती हैं। और सर फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस पर है, उसमें हमने पढ़ा था कि हम 2 टैंक्स यूज़ करते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उसकी जो कैपिलरी के ज़रिए जो है उनकी मूवमेंट होती है, और उन दोनों के दरमियान जो जेल है वो माउंटेड होती है। और सर फिर इसके अलावा हमने फ्लैट बेड यूनिट पढ़ा है जो हॉरिजॉन्टल होता है, सर उसमें हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करवाते हैं हम। और सर फिर इसके बाद वर्टिकल है, इसमें प्रोटीन की मूवमेंट करवाते हैं वर्टिकली। और सर इसमें बताया कि एसटीएस यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोटीन है उस पर चार्ज नेगेटिव नहीं होता, तो फिर एसटीएस उसको डीनेचर करते हैं और फिर उस प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर वो मूव करती है। सही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया. Thank you. And next is The effect of pH on net charge. So proteins are amphoteric.
compounds, and that is they contain both acidic and basic residues. So basic और acidic residue दोनों होंगे proteins में, इस वजह से proteins are amphoteric. So proteins are amphoteric compounds, and each protein has its own characteristic charge properties depending on the number and kinds of amino acid. So ये number of and amino कि किस type के amino acid एक protein में मौजूद हैं, so ये protein उस पर depend करेंगे. Carrying amino acid, carrying amino and carboxyl groups. So एक amino acid में carboxyl और amino group होते हैं, लेकिन side chain में भी मौजूद हैं कि नहीं, so that will depends on the protein. The protein will depend on their constituents, on the residues actually, कि जो amino acid residues में मौजूद हैं वो उन पे depend करेगा, उनके number पे और उनके kind of amino acid residues पे, amino acids पे. So nucleic acid, unlike proteins, are not amphoteric. So nucleic acids like DNA and RNA, DNA और RNA जो हैं वो amphoteric नहीं होंगे. They remain negative at any pH used for electrophoresis. So in the electrophoresis, the DNA will remain negative because it is not amphoteric and it is negatively charged. Protein, unlike nucleic acid, they are amphoteric, and they will behave depending on the number and kind of amino acids within them. And there are some concerns like important stages at every stage of important points at every stage of electrophoresis. So before while you are making a gel, when we make a gel, we need to have few things in mind, as these are exothermic reactions. It will depend on that. Gel irregularities can happen. Pore size is also important. So these three things, and during the polymerization, means the gel, either if that is agarose gel, so agarose gel polymerization, and if that is acrylamide gel, so agarose and acrylamide, if I could write it like agarose and acrylamide. So these two types of gels are normally used. So agarose is normally having larger pore size. Acrylamide has smaller pore size, and these two types of gels, they also depend on the concentration of the agarose and acrylamide. So that depends on, so the pore size depends on that as well. So the pore size, and during the polymerization means during the gel formation, and that is polymerization. So that is exothermic reaction. So if that is, the gel is not made good, so the electrophoresis will not be good enough. If gel irregularities are there, some gel is polymerized, some is not polymerized well, so that is irregular, and that could make problems. And similarly, the size, pore size also matters. So if you can see here in the diagram on the right side, this is a 0.7% gel. So that means 0.7% of the polymerizing constituent. Like if that is 0.7% agarose, so 0.7% agarose means the pore size is more, the DNA or RNA that can move faster. So if you can see, in the same time it moves faster, and it reaches here. But if the concentration of the gel is 1%, so so that will move slower if we compare it with this. The whole the all of the bands will move slower. And if we compare it with this, with 1.5%, that is the pore size will be smaller, the concentration of the gel is more, so it will move even slower than this one. So now this band
if we compared it with this band, if we compare it with this band, so the movement is different now. Like this speedy movement, as if compared to this one, this is slower and that is slower. And also the strength of the band strength varies, and that depends. So 1% is optimal, and then it reduces like that, and it is more like visible, and this is sharp bands could be seen. So the pore size also matters. सर And Gigi, सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बता दें. exothermic reactions normally सर ये मैं बताऊं. Gigi, please. सर इसमें ये होता है कि एक्सोथर्मिक जो इसमें ये होता है कि जो एग्रोज का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है और जो एक्रिलामाइड का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ये वेरी करता है. जो एग्रोज का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है एक्रिलामाइड की निस्बत. इसका मतलब ये होता है कि डीएनए आरएनए प्रोटीन्स जो होती हैं अगर वो कम टाइम के लिए इस्तेमाल करनी हो यानी जल्दी रिजल्ट लाना हो तो यानी एग्रोज इस्तेमाल करते हैं. अगर हम उसको ज्यादा लंबे अरसे के लिए करेंगे तो फिर प्रोटीन आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्रिलामाइड यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर एग्रोज से ज्यादा होता है, क्योंकि एसडीएस में ज्यादा टाइम देना पड़ता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की निस्बत. वो भी है, और वहां पे पोर साइज कम होता है एक्रिलामाइड में, तो इस वजह से भी टाइम ज्यादा लगता है. यहाँ पे इस दोनों को अगर कंपेयर कर लें तो भी ठीक है, दोनों को ना भी करें. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक इट विल रिलीज हीट. आपको आवाज आ रही है? मुझे इंटरनेट लाइक यस सर ऑप्शन आ रहा है यस इंटरनेट. सर आ रही है. Okay, so it will release heat. So during the release of the heat, so we have to take care of the like we have like इस तरह हम करेंगे कि polymerization के दौरान like हम उसको जेल को हीट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको like they release the heat and that could be slower. Like इस तरह नहीं है कि हम इसको snap cool कर दें. तो उस चीज का, इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन. ये 3 स्टेप्स जो है ये पॉलीमराइज, ये 3 पॉइंट्स ये जेल प्रिपरेशन के दौरान है. ये जो है लाइक ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जब हीट अगर ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकते हैं, ठीक है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स. स्माइल इफेक्ट हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस. And the third one is temperature regulation of buffer. So that is important. Temperature regulation means we have to take care of the temperature of the buffers. Means कि अगर हमने एग्रोज या एक्रिलामाइड को टैंक में रखा हुआ है, the temperature rises. अगर temperature rise हो रहा है तो हमने फिर क्या करना है, कुछ कूलेंट साइड में रखने हैं ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, ठीक है. सो और स्माइल इफेक्ट क्या है, दिस इज द स्माइल इफेक्ट. अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे टेम्परेचर का या इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का सही तरह से, तो ये देखें ये स्माइल इफेक्ट आ रहा है. बिल्कुल इसको स्ट्रेट आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए इस तरह, ठीक है. बट एक जेल का एक साइड जो है दैट मूव एट 1 रेशो. ये देखें यहाँ पे बैंड्स भी कुछ इरेगुलर टाइप हैं, ठीक है, एंड दैट इज स्माइल इफेक्ट. अब यहाँ पे देखें ये प्रोटीन्स के बैंड्स हैं, सो ये इस तरह के बने हैं, तो इट इज स्माइलिंग लाइक स्ट्रक्चर. दिस शुड बी स्ट्रेट, ठीक है. So this is the smiling effect, and this could be the error during the electrophoresis. We have to take care of these things as well. समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर. ठीक है. That is the use of SDS, and that will like before SDS, a protein may be like this, the charged alkyl groups and hydrophobic phobic areas, and after SDS it will be like this, that the negative charge will be homogeneously like distributed. And we are done with this, the temperature and the electrophoresis. And then the role of solid support matrix, actually that is important. It inhibits convection and diffusion, which could otherwise impede separation of molecules. And what actually convection is and diffusion, so convection is the transfer of heat through a fluid. So the fluid move from one part to another part, and it transfers the heat, the temperature. The temperature will change.
And conduction is actually the transfer of heat or electric current from one substance to another by direct contact. And radiation is through in the form of rays, waves, or particles. So these are the different types of transfer of energy. And what is the role of solid support matrix? Why we use gels like polyacrylamide gel or agarose gel? Why we use them? So these sort of gels for separation of macromolecules, they will inhibit convection and diffusion, which otherwise which would impede separation of molecules. So the molecules could not be separated, the macromolecules could not be separated based on their charges, based on their sizes. And it can provide additional separation through molecular sieving. It provides sieves, molecular sieves, and through molecular sieving, the macromolecules will be separated. This is like 3D structure of a polyacrylamide gel, and these they provide the tunnels with different diameters. The proteins or the DNA or the macromolecules could pass through them, and they could be separated through these molecular sieves. And it allows a permanent record of result through staining after the run. So after the electrophoresis is complete, after the run is complete, we can then stain them to permanently record the results. And a porous gel acts as a sieve by retarding, like they slow down the movement of the macromolecules in some way, in some cases by completely obstructing the movement of macromolecules, while smaller molecules migrate freely. So the molecules could freely migrate if they are small through the gel, and the larger molecule, they will have slow motion of within these sieve tubes because of the size, permittable size. And next is by preparing the gel with restrictive pore size. The operator can take advantage of molecular size differences among proteins and nucleic acid. So we can restrict the pore size. We can have, if we want to have a larger pore size, if our protein or if our macromolecule, that's DNA or RNA, that's the molecule size is more, we need to prefer more pore size so that they can move easily. But if the protein or the RNA or DNA size is smaller, then we have to make the pore size smaller in order to restrict them within the gel. So this could not be freely move through the gel out. And the operator can take advantage of the molecular size differences among proteins and nucleic acids. And next is, although agarose and polyacrylamide they differ greatly in their physical and chemical structures, they both make porous gels and both are electrically neutral. So these both types of gels, they are electrically neutral also, although they have different physical and chemical structures. And next is because of the pores of an agarose gel. So the one difference is that the agarose gel and the pores are larger, and agarose is used to separate macromolecules such as nucleic acid, large proteins, and protein complexes. So if you have protein complexes like combination of proteins, you need to opt for agarose gel. But if you have simple smaller proteins, go for polyacrylamide gel, because polyacrylamide gel, the pore size is smaller. And polyacrylamide, which makes a small pore gel, is used to separate most proteins, small oligonucleotides, and that's it. कोई कौन explain करेगा इसको अभी तक जो हुआ है? Who will explain? Class, Sir, come मैं on. कर दूं? जी, दुआ.
सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमने कल उसके पैटर्न्स पढ़े थे कि किस तरीके से स्माइली फैक्टर को सारा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि जेल हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो जेल प्रिवेंट करती है हमारे पास कन्वेक्शन के प्रोसेस को। कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स। उसके बाद सर हमने कंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा कि कंडक्शन को प्रिवेंट करती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब हम जेल को अरेंज करते हैं तो उसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू पोर साइज जो होता है, आपके मॉलिक्यूल का साइज, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर तो आपका पोर साइज बड़ा है तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बड़ा होगा वो उसमें से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज जेल का छोटा है तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली मूव कर जाएंगे, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो देर से मूव करेंगे। यानी पोर साइज पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि इसको एक दफा, अब इसको रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग स्टेनिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हम इसको डिफरेंट तरीके से स्टेन करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने जेल दो टाइप्स की जेल पढ़ी, जिसके अंदर एगारोस था और पॉलीएक्रिलामाइड था। एगारोस हम लोग यूज करते हैं लार्जर पोर साइज के लिए, मतलब कि हमने अगर लार्ज प्रोटीन्स को हम लोगों ने क्वांटिफाई करना है तो हम तब ये यूज करेंगे। और पॉलीएक्रिलामाइड हम लोग करते हैं स्मॉलर पोर साइज के लिए, कि अगर स्मॉल साइजेस की प्रोटीन्स को हम लोगों ने क्वांटिफाई करना है तो फिर हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड यूज करेंगे। ग्रेट। ओके हंसा, आपने इसके बाद डिस्क्राइब करना है, ठीक है? ओके सर। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हंसा। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत हल्की Okay, आ रही है। and next is अभी भी हल्की आ रही है? अभी हल्की आ रही है? ठीक है। नो सर, अब ठीक No? आ रही है। Okay, so the internet has some problem. Okay, okay. Okay, agarose is a highly purified, uncharged linear polysaccharide derived from agar after removal of agropectin. So the agar actually the agar has so agarose remains here, and agarose is actually purified, uncharged, so this will have no charge. They will be neutral. That will be neutral. And linear polysaccharide, that will be not circular or any other, so that will be linear polysaccharide. So we will be using linear, uncharged, purified chemical, and that will be named as agarose, and that is actually the part of the agar. So it has been derived from agar. So and that's agarose. And what actually agar is, it is obtained from red seaweed algae, and that is Galidium and Gracilaria. These are two different genuses, and both are within red seaweed. You can see the plant, and this is a seaweed, red seaweed, and from this red seaweed we obtain agar, and this agar is actually a solidifying agent. So in plant tissue culture, agar is, and it don't have any charge, and if we remove agropectin from the agar, we get agarose. And it has, what agarose is, it has a repeating unit of disaccharide. So and disaccharide, it has the D galactose 6 N hydro L galactose. So this is 36 N hydro L galactose and the D galactose. So this is what, this is a disaccharide. So this is the repeat. So agarose is the repeating unit of these disaccharides. And after that, and these are two different representation of the same thing. And agarose gel electrophoresis is so ye kaun explain karega? Who will explain, so that we have basis for the further explanations? सर मैं करूं? Ji, please.
सर हमने इसके अंदर एगरोस के बारे में पढ़ा है कि बेसिकली एगरोस होता क्या है। एगरोस बेसिकली एक लीनियर पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है जो कि अपनी नेचर में न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब एगरोस कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमारे पास एगरोस हमें एगर से मिलता है। अगर हम एगर के अंदर से एग्रोपेक्टिन के यूनिट्स को रिमूव कर देंगे तो तब हमें एगरोस मिलेगा। और बेसिकली एगर हमें कहाँ से मिलता है? एगर जो ओरिजिनेट होता है वो होता है रेड सीवीड एल्गी से, और वहां से ये बेसिकली क्या होता है, एक डाइसेक्राइड यूनिट होता है और ये असल में सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, यानी जो एज अ सॉलिड सपोर्ट और जेल काम करेगा। और इसके अंदर सर उन्होंने नीचे उसके यूनिट्स बताए हुए हैं कि जी यहाँ पे डीगलेक्टोज होता है। और ओके सो इसमें इस तरह होता है कि एगर जो है दैट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर में सर्टिफाइंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। लाइक हमने किसी माइक्रो प्रोपगेशन करवानी है तो वी ग्रो प्लांट्स इन मीडिया, उस मीडिया करते हैं विटामिन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को चाहिए प्लांट ग्रो करने के लिए। सो एजेंट हमें चाहिए एंड दैट मीडिया, एंड वो मीडिया हम जो है उस मीडिया लाइक वाटर वी हैव, उस वाटर को हम सॉलिडिफाई करते हैं इन पेट्री प्लेट्स एंड इन बीकर्स, और इन बीकर्स को हम फिर बंद करते हैं। और ये जो है दीज न्यूट्रिएंट्स आर the agar is being added, agar उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो agar जो है so agar is actually certifying agent। so इसमें फिर हम प्लांट ग्रो करते हैं, we can grow plants in the media। और ये जो है ये solidifying, ये agar just solidifying agent है because it has no charge and they are linear polysaccharide, इसमें कोई nutrients नहीं होते, इसने just solidifying agent के तौर पे काम करना है, and that is agar। but if we remove agropectin from this agar we get agarose। so and then after that we get agarose, और agarose जो है we use in molecular biology, और उसमें हम like जेल्स बनाते होते हैं एगरोज से। और जेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक वी हैव अ जेल, और उस जेल में लाइक they provide the molecular sieves। इसमें हम फिर डिफरेंट लाइक हम इसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो है ये रन करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। सो these are two different properties, two different things uh, and taken from the same thing। it means कि same plant से हमने एगर लिया और उससे एगर को हम यूज कर सकते हैं for in the tissue culture, and then agarose in molecular biology for the separation of macromolecules। am I clear to the whole class? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Gee, that's good। and next is agarose dissolves when added to boiling liquid। अगर हम किसी boiling liquid में इसको add करेंगे so it will dissolve because this is in powder form, and the powder form will dissolve in boiling liquid। it remains in a liquid state until the temperature is lowered to 40 degrees centigrade। so it will convert into, it will make gels if and before and above 40 it will be a liquid in the in that liquid, it will be dissolved in that liquid। but if we reduce the temperature so it will make gels। and agarose gel are fragile, however they are actually hydrocolloids held together by the formation of weak hydrogen and hydrophobic bonds। the pore size may be determined by adjusting the concentration of agarose in the gel। so we can adjust the concentration of agarose in the gel, and the concentration of the gel could be 0.8 up to 2%। so percent means this 2% mean 100 ml of water।
So if we add 1 gram in 100 ml of water, and if we add 2 grams in 100 ml of water, what could be the difference? Like if I add mm, 1 gram in 100 ml of water, and if I add 2 grams, so this will be 1%. Yes. सर इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा. Yes, इसकी concentration में difference आएगा, लेकिन what will be the difference then? It will be 1% and it will be 2%. 2%. So what will the two? The difference will be like if this is 2%, the pore size will be small because there will be more agarose in there, and the sieve molecule, the sieving will be smaller. The pore size will be smaller because there is more concentration of agarose. And in this, the molecules can move freely because the pore size will be larger. Yes, sir. ठीक हो गया? So Yes, that will mean if we have larger proteins or larger molecules, we need to use 1%. We use lower concentration. And if we have smaller fragment, then we need to have a higher concentration, because if we use lower concentration, the molecule will move out of the gel very early, then could be detected. And next is nucleic acid separated by agarose gel electrophoresis are stained with ethidium bromide or gel red. And gel red or ethidium bromide, these two types of staining are used and could be visualized by UV illumination. So UV trans illuminator, we can use UV light to visualize the ethidium bromide or gel red that intercalates in the DNA or RNA. And then is staining can be done either in gel like precast or after electrophoresis. After electrophoresis is done, we can add the staining material. Am I clear? Who will explain? सर मैं कर दूं. Anaya, please. सर Anaya मैं कर कर दे. देता हूँ. अनाया कर दे, शुएब इसके बाद आपने करना है. सर एग्रोज जो होती है वो बेसिकली वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो उसको हम लिक्विड में करने के लिए उसको हम बॉइलिंग लिक्विड में डालते हैं, और ये लिक्विड स्टेट में तब तक रहती है जब तक इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो लोअर देन 40 सेल्सियस होता है, और तब ये जेल की फॉर्म में होती है. और उसके बाद ये जो होती है एक्चुअली में जो हाइड्रोकोलाइड्स जो हाइड्रोकोलाइड्स बॉन्ड होता है जिसकी जो कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक का वीक बॉन्ड होता है, ये एक्चुअली हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं जो कि वीक बॉन्ड हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की थ्रू ये बनती है. और उसके बाद इसका सर आपने पोर साइज बताया था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती होती है. जैसे वो डिपेंड करती होती है कि हमने किस साइज के जो प्रोटीन्स हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड हैं जिनको हमने सेपरेट करना है, उस पर उसके हिसाब से ही हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं ना वो मैनेज करते हैं. जैसे कि इसकी जो जेल की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 0.8 से 2.0 तक होती है, लेकिन अगर हम स्मॉलर जो साइज के जो प्रोटीन्स हैं ना उनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं ना जेल की वो हाई रखते हैं. और अगर उसकी जो लार्जर साइज के प्रोटीन्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं तो उनको हमने अगर सेपरेट आउट करना है तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो रखेंगे, मींस के 1 या फिर इस तरह रखेंगे. उसके बाद सर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना जो सेपरेट आउट होते हैं उसको हम डाई से स्टेन करते हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप की डाई है. यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड या फिर जेल रेड है, जिसको हम फिर विजुअलाइज कर सकते होते हैं यूवी एलिमिनेशन से. और स्टेनिंग जो होती है वो हम पहले भी कर सकते हैं और आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर सकते हैं, और फिर उसको विजुअलाइज कर सकते होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को. एग्जैक्टली. सो पहले किस तरह कर सकते हैं? सो who will explain next? यस सर. सर बेसिकली एग्रोस जेल जो है ये डिसोल्व होती है जब उसको पाउडर फॉर्म में होती है और बॉइलिंग लिक्विड में बन जाती है जब इसको डिसोल्व करते हैं. ये बेसिकली लेस देन 40 टेम्परेचर से ही रहती है जेल में. जब से ज़्यादा टेम्परेचर में होगा तो ये
जेल में नहीं रहेगी, ये मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी ज़्यादा। एग्रोस जेल फ्रेजाइल होती है बेसिकली, इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन जो फॉर्मेशन बनती है। तो इसमें हमने पोर साइज की बात की कि अगर लोअर पोर साइज होंगे तो हायर कंसंट्रेशन होगी, और लार्जर पोर्स होंगे तो लोअर कंसंट्रेशन। न्यूक्लिक एसिड हम इसमें बात की कि एथिडियम ब्रोमाइड और जेल रेड होती हैं, वो सेपरेटेड करते हैं डाई के तौर पर। विजुअलाइज बेसिकली यूवी लाइट जो होता है विजुअलाइजेशन पे होती है, अगर जो एथिडियम ब्रोमाइड को विजुअलाइज करती है। एथिडियम ब्रोमाइड बेसिकली ये कंटीजियस होती है, इसी वजह से हम ग्लव्स नहीं पहनते, इसको बाद में स्प्रेड कर देते हैं थ्रू ग्लव्स, और इससे इन्फेक्शन वगैरह हमारे हाथों में हो सकता है। और स्टेनिंग के बाद में बात की कि प्लीज क्या आफ्टर फ्लोराइजेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। Okay, good. So one thing we need to have is how we can do precasting staining. That could be like when we make a gel. During that stage, we will add ethidium bromide or gel red. And after electrophoresis, we will dip the whole of the gel in the ethidium bromide solution or gel red, and we can stain the gel, and after that visualization will occur. What ethidium bromide will do, you already know even better than me that if we have a DNA, what the ethidium bromide will do, if that DNA is like this, and the ethidium bromide will intercalate. Ethidium bromide will intercalate within the DNA. That will intercalate within the DNA, and after that, when this intercalate in the DNA, and we if we check it in the UV light, if we check it in the UV light, it will give fluorescence. And this band now after visualization, we will only see a single band, like we will only see visualization only. So we will see this will be the result. We will see only this visualization, and that's it. So we will see only this visualization, and we will see this band because of the intercalation of these ethidium bromide molecules. Because and one more thing, ethidium bromide is actually positive charged, and this is positive charge. Ethidium bromide is positively charged, and DNA is negative charge. So and they will be partial positive. Sorry, that will be partial positive, and this will be partial positive, and this will be the DNA is actually partial negative, and they will the ethidium bromide will bind there, and it will move in the direction. Okay, so up till now it's clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and to move GG please. सर फ्रेजाइल वाला ऑप्शन मतलब दूसरी जेल्स होंगी वो कौन सी होंगी? ये तो फ्रेजाइल होगी ना, जब इसमें अंदर फॉर्मेशन होगी। Fragile means it is weak, it can break easily. But agarose gel is fragile. Polyacrylamide gel, they are not fragile. वो थोड़े से सख्त होते हैं. They can easily be molded. They can easily be like they are not fragile. They break if we use carelessly. ठीक है? So this is in comparison. This is in comparison to polyacrylamide gel. जी please. सर आपने बताया कि एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है। लेकिन सर तो वो इसका उसके डीएनए की मूवमेंट पे या न्यूक्लिक एसिड की मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता? नहीं, ओवरऑल जो है वो फिर भी नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ नहीं, ओवरऑल जो है वो फिर भी नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, इस वजह से वो मूव करता होता है। लाइक वन थिंग क्लास, एक चीज समझ लें, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जस्ट एक चीज एक चीज आई वांट टू मेक इट लाइक, ये असल में मैं खुद भी सीख रहा हूँ। डोंट यू थिंक दैट आई एम लाइक एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट। लाइक
the DNA, like we have two poles, and that is from, this is the cathode and this is the anode, and the negatively charged DNA will move, and actually what the DNA will move in this direction. The Excuse DNA me, will sir, move. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आवाज बहुत नीचे आ रही है। अच्छा, अभी भी इस तरह है? सही है। नो सर, ठीक है। अच्छा, so the DNA will move from negative to the positive because it has overall because it will have overall a negative charge. Sorry. सर फिर चलिए आपकी आवाज। नहीं, मैं बोल नहीं रहा, अभी बोल रहा हूँ, अभी बोलूंगा. So it will have overall negative charge. ठीक है, so therefore it will move from the from cathode to anode. But ethidium bromide, we also add ethidium bromide in the DNA. So so if we have pre-stained the gel, if we have this gel, if we have this gel and this gel has been pre-stained, if we have this gel and this gel has pre-stained, ठीक है, प्री स्टैनिंग का मकसद क्या होगा? प्री स्टैनिंग का मतलब ये होगा कि पूरी जेल में इथिडियम ब्रोमाइड विल बी देयर, इस पूरे जेल में इथिडियम ब्रोमाइड होगा. हमने डीएनए को सिर्फ यहाँ पे लोड किया है और अब इसको रन करना है, लेकिन इस पूरे जेल में इथिडियम ब्रोमाइड मौजूद है. इथिडियम ब्रोमाइड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इथिडियम ब्रोमाइड पे पॉजिटिव चार्ज है, so it has a positive charge. Or if I write ethidium bromide here, ETBR. So ethidium bromide has positive charge. This ethidium bromide, and due to the ethidium bromide, this gel will be looking like red in color. But when we run it, it will move. From negative to positive. Ethidium bromide will move in this direction. The DNA will move in that direction. Ethidium bromide will move in this direction. So at the end of the running of the gel, अगर हम इस जेल को हाफ रन करें, हाफ टाइम के लिए, so you can observe a one visible change, and that is this half of the gel will be looking like this will be this part will be red, and but it's not working. Okay, so this half, so this is visible in the gel actually. So this half will be blue because the ethidium bromide that moves in the opposite direction, and the DNA moves in this direction. So this half will become blue if we run it half the DNA. If अगर यहाँ तक हम run कर दें DNA को, so ये इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये यहाँ से निकल रहा होगा ना. सो सिर्फ और सिर्फ वो इथिडियम ब्रोमाइड रह जाएगा जो डीएनए के अंदर इंटरकलेट कर गया है. इस वजह से हमें डीएनए के अंदर बैंड यानी रेड कलर मिलेगा, बाकी पूरी जेल जो है दैट विल बी ब्लू. एम आई क्लियर? यस सर. यस यस ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? मे बी माय वॉइस हैज बीन लाइक डिस्टर्बटेड. सर मैं कर वेट कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं कर दूं? अनाया कर दें प्लीज. सर हमारे पास जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। जो डीएनए होता है वो नेगेटिव पार्ट की साइड पे होता है और उसकी मूवमेंट जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ होती है। और एथेरियम ब्रोमाइड जो हमारे पास डाई है, इसको हम अगर जेल के अंदर पहले से प्री कास्ट कर देते हैं तो जो एथेरियम ब्रोमाइड है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो मूव करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और डीएनए मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसको हाफ रन करेंगे तो एथेरियम ब्रोमाइड जो है वो जो पूरी जेल में थी तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी और वो इंटरकलेट्स कर जाएगी इन बिटवीन द डीएनए, और बाकी जो बाकी जेल होगी, जो बाकी बचेगी वो डाई होगी, वो बाहर चली जाएगी यहाँ से, और सिर्फ वो रह जाएगी जो डीएनए के अंदर जो डीएनए के साथ बाइंड कर लेगी। और उसके बाद हम उसको उसके डीएनए के को स्टेन कर देगी तो उसको हम इससे बैंड्स बनेंगे और फिर उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं इजीली के। That's good. ठीक है ना. Okay, and so we are done with these things, precasting and after electrophoresis, how the ethidium bromide will behave, and we didn't cover like gel red. So gel red is actually the same thing. It is same like ethidium bromide, but it is the gel red is more environmental friendly and less fluorescent nucleic acid dye, and it is actually the ethidium bromide is actually toxic, and also it is a potential carcinogen. Ethidium bromide is a potential carcinogen. So आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। So ethidium bromide is a potential carcinogen. Now people are converting toward gel red. Gel red is actually that is safe, environmentally safe, and that is equally sensitive. Like and the sensitivity of ethidium bromide and gel red can be compared. They are equally sensitive. They can be used for detection and scanning of double-stranded DNA, single-stranded DNA, RNA in agarose and polyacrylamide gels. So what was next is the sample loading dyes. Sample loading dyes in agarose gel is also important. We have the DNA is not like it will not settle down in the water in the wells, so we need to have a loading dye attached to that DNA, and this loading dye will have two functions. One is the dye, the color that will track the DNA, and the second one is the loading problem. So if I could like explain this thing in like this, if we have like a well, if we have a gel, and if there is a well in there, and we have to load the DNA in these wells. So when someone try to load DNA in these wells, so there will be buffer out there. So there could be a problem that the DNA or RNA it's turned to get out of that, like it will move out of the well, and it could not settle down in the well. So for that we need to add something heavier that could settle down this DNA briefly and well in these wells. So what could be done? These loading dyes are sample loading dyes are there, and sample loading dye. Wait, I will check for the chat. So loading dyes are there. So and these loading dyes they are consist of glycerol or sucrose to increase the density of the sample. So sucrose or glycerol, they are added in the loading dye, so they increase the density of the sample. Second, so by increasing the density of the DNA sample or RNA sample, it will easily settle down in the well. And second thing is the buffer TAE, tris acetate EDTA or TBE, tris borate EDTA is there. So TAE or TBE buffer are used
in the electrophoresis. And this dye is xylene cyanol. This will be the tracking dye, xylene. Xylene cyanalone, and this is actually here, this one. So xylene, this migrates along with 3,500 base pair of fragment. If the fragment is heavier, it will be here. It will, like, if this, that is 3,500 base pair, so it will be here. So but if the bromophenol blue size marker, it can be added with xylene, and this marker, this is bromophenol blue, is here. It will move along 300 base pairs fragment. And the third one is orange G. This orange G. So orange G migrates approximately 40 base pairs. So actually, if we add all three dyes in a sample, DNA, but if we have these tracking dyes, so we can check either our DNA size is 40 base pair, we can easily know that the band will be here. So it could not go out, it can go out of the gel then. And we cannot then visualize that band under UV transilluminator or UV light. So हम उसको फिर visualize नहीं कर सकते. So these tracking dyes are important in order to track where these our DNA bands has that has reached, and this can be visualized with naked eye, these dyes. So these dyes are important, and in some cases one of the two or all of the three, they are added, or one of the two or two dyes are added in the loading sample loading dyes. And what ethidium bromide is doing, what ethidium bromide has, wait for a while. Okay. Why ethidium bromide is added? Ethidium bromide has been the most commonly used DNA strand for many years. Structure is could be like this, and ethidium bromide is powerful mutagen and is moderately toxic. So it is a mutagen and a toxic chemical. So people do avoid ethidium bromide usually, and gloves should be worn at all times using ethidium bromide while exposing to these chemicals. Dispose of waste correctly. Like we need to take care of the waste of these gels as well. Like it will contain ethidium bromide, so we will be taking care of these. And to avoid that, we can use gel red, and gel red is a safer alternative to ethidium bromide. New generation of safe nucleic acid gel stands, so that will stand nucleic acid gels, cannot penetrate latex gloves and cell membranes. It's a good thing, and that is same for ethidium bromide as well. Non-toxic and non-mutagenic. Ethidium bromide is toxic and potential mutagen, but gel red is non-toxic and non-mutagen and not classified as hazard waste. Ethidium bromide is a hazardous waste, and gel red is not a hazardous waste. This can be safely disposed of down the drain or regular trash. So it can be disposed of in regular trash. It cannot be disposed of in the regular trash actually. And okay, who will explain this? मैं कर दूं? जी प्लीज दुआ कर दें. सर सबसे पहले तो हमने इसमें पढ़ा कि हम लोग लॉडिंग डाई के साथ, हम लोग अपने डीएनए सैंपल को एक लॉडिंग डाई के साथ हम लोग यूज करते हैं. अब उस पूरे मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ग्लिसरॉल होता है या सक्रोज होता है और या हमारे पास साथ होती हैं डाइज. अब
ये हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जब जेल के वेल्स के अंदर ऐड करते हैं तो डीएनए का जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि उसके अंदर बफर ऐड है। तो जब हम वेल्स के अंदर डीएनए को ऐड करेंगे तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो वेल्स के अंदर प्रॉपर्ली ऐड ही ना हो, तो हम फिर इसलिए साथ ग्लिसरॉल और सुक्रोज ऐड करते हैं ताकि हमारे सैंपल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए और वो अच्छे तरीके से वेल के अंदर सेटल डाउन हो सके। दूसरी चीज ये है कि हम लोग साथ यूज करते हैं डिफरेंट डाइस। अब डाइस के अंदर हम लोग जाइलीन यूज करते हैं, हम लोग ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज करते हैं, और हम लोग ऑरेंज डाई जो होती है वो यूज करते हैं। अब ये तीन डाइस जो डिफरेंट है वो डिफरेंट बेस पेयर्स के साथ बाइंड आउट होती हैं और वो उसको डिटेक्ट करती हैं। जैसे जाइलीन जो है वो 3500 बेस पेयर्स पे वो जाके डिटेक्ट कर देता है, ब्रोमोफिनॉल जो है वो 300 बेस पेयर्स पे, और इसी तरह जो लास्ट हम लोगों ने ऑरेंज डाई यूज किया था वो 40 बेस पेयर्स को डिटेक्ट कर सकता है। हम ये तीनों भी इकट्ठे यूज कर सकते हैं कि ताकि हम डिफरेंट जो हमारा सैंपल साइज है वो हम लोग विजुअलाइज कर सकें। उसके अलावा इसके अंदर जिस तरह यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, उसके अलावा हम लोगों ने एथिडियम ब्रोमाइड का देखा था कि एथिडियम ब्रोमाइड बेसिकली क्या होता है कि एथिडियम ब्रोमाइड सबसे पहले हम लोग मोस्ट कॉमनली मेथड वही था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेजर्डस होता है और ये म्यूटाजेनिक होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह यानी आम तरीके से हम लोग इसको डिस्पोज नहीं कर सकते। और इसके साथ जब हम लोग इसके साथ इसको हम यूज करते हैं तो हम स्पेशल मेजर्स यानी हम ग्लव्स वगैरह पहनते हैं ताकि ये कोई भी यानी ये हैजर्डस एजेंट होता है तो ताकि हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ना आए। और इसका बेटर अल्टरनेटिव जो है जेलरेड होता है। जेलरेड मेथड जो है वो ज्यादा सेफर होता है, क्योंकि ये जो हमारे ग्लव्स के अंदर और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर एक तो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, एक ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन म्यूटाजेनिक होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड को आराम से स्टेन कर सकता है, और ये हैजर्डस भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इजिली डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। Okay, and next is agarose gel electrophoresis in pictorial view. सर जी सर हम पे अपनी लैब्स में एथिलीन ब्रोमाइड क्यों यूज करते हैं? यस सर, क्योंकि वो तो टॉक्सिक के साथ साथ म्यूटाजेनिक भी है, म्यूटेशन भी कर देता होगा। Yes, yes, you're right. We have to avoid that. We use gloves, and instead we are careless in these things. We have to take care of these things. Yes, you're right. सर उसको एल्यूमिनियम फॉइल में करके रखा था ताकि रेडिएशन इफेक्ट ना हो। सर हम नहीं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम शफीक, एल्यूमिनियम फॉइल को हमने इस वजह से उसमें करते हैं कि दैट इज फोटो सेंसिटिव। आप अगर देखें ना तो जो केमिकल्स एम्बर बॉटल्स में आती हैं, सो एम्बर बॉटल में आने का मतलब ये होता है कि द केमिकल इज मोस्टली फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव की वजह से अगर उस पर लाइट पड़ती है सो वो जो है वो डिग्रेड हो सकता है, वो केमिकल खुद डिग्रेड हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल में रखते हैं। ओके सर, ओके जी। कायनात यू आर आस्किंग? नो सर, नथिंग सर, बस मैं यही पूछ रही थी कि जेल रेड यूज नहीं कर सकते हम अपनी लेबोरेटरीज में? हाँ, दिस इज असल में ये जो है अभी न्यू ही है कंपैरेटिवली। पीपल आर लाइक कन्वर्टिंग टुवर्ड दिस, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कॉमन हो जानी है, एंड दिस विल बी कॉमन। सिमिलरली हम सदर्न ब्लॉटिंग में भी हम रेडिएशंस यूज करते होते हैं। पीपल डू अवॉइड रेडिएशंस नाउ, एंड पीपल आर कन्वर्टिंग टुवर्ड अल्टरनेटिव थिंग्स। और आजकल बहुत ज़्यादा डिग डाई है, सो पीपल आर यूजिंग दैट थिंग। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये कुछ एक्सपेंसिव होने की वजह से, कुछ और रीजंस होती हैं जिसकी वजह से एथिलियम ब्रोमाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो शिफ्ट आने में मींस मैंने फॉर इंस्टेंस अगर 8 साल एथिलियम ब्रोमाइड के साथ काम किया है, सो उसको शिफ्ट करने में थोड़ा सा मसला आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इवन वेंडर्स के पास भी दूसरे, क्योंकि सारे लोग एथिलियम ब्रोमाइड अभी तक यूज़ कर रहे थे, एंड दैट इज़ ईजी टू हैंडल, ईजी टू यूज़, लेकिन उसके फिर नुकसानात भी हैं। And even हमारी लैब में we don't have even good quality gloves. We use plastic gloves. So in that case we have to avoid ethidium bromide. We have to avoid that. Okay, those are porous, and these sort of things that would be taken into consideration as well. You're right. सर वो उनका साइज वगैरह भी तो डीएनए का चेंज कर देते हैं ना, उस पर भी तो इफेक्ट होता है। किसका साइज चेंज कर देते हैं? सर एथिलियम ब्रोमाइड का, ये उसके साइज पे या फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे भी तो इफेक्ट होता है ना, जब वो डीएनए के साथ जाके बाइंड करती है तो। हाँ, ये तो जेल रेड ने भी करना है, क्योंकि उसने भी तो डीएनए के साथ चार्ज के बेस पे बाइंड करना है। ओके जी जी।
क्योंकि अगर चार्ज डिफरेंट ना हो तो इसने तो बाइंड ही नहीं करना डीएनए के साथ, इंटरकलेट ही नहीं करना. Okay, so if we could see this diagram, this is pictorial view, and this is the power supply, and this is 0 minute, and this is the plastic tray. It has not been run because it is 0 minute time, 0 minute हुए हैं, and this is from the negative to the positive, and application of the electric field is this, and this is the DNA is DNA sample in loading buffer. So loading buffer has been added, and you know what loading buffer is. So, and this will be the gel tank will have the loading and the buffer containing. So we have two types of buffer now. One is loading buffer, and the second one is the running buffer. So running buffer is a medium for the electrophoresis, for the conduction of charges. So running buffer should be there, and that could be TAE, TBE, and loading buffer is the loading dye plus plus sucrose or glycerol, and that's it. And next is when time is when there is like when the power is supplied, and after 30 or 45 minutes you will like we will visualize bands, DNA fragments, if we check under UV light. So under UV trans illumination or documentation, we will observe DNA bands, and if you can see these DNA bands, this like the lower part is like bluish in color. It's not visible here, but this will be bluish in color, and this will be a part of this will be red in color because the ethidium bromide gonna release from this end, and the DNA is going in this end, and after if we apply more time, it can move out of this gel in that way. But we will track the movement of the DNA through loading dyes. The loading dye will tell us where actually the bands are and probable are, and we can then visualize the gel under UV, and we can see the bands then. And these bands are visualized due to the intercalation of ethidium bromide. The ethidium bromide actually give us color, and this color is actually the ethidium bromide color. And this ethidium bromide, due to this ethidium bromide, it will be like the DNA, the ethidium bromide has been intercalated in the DNA. Otherwise, the DNA is colorless. If we don't add ethidium bromide, we don't could observe them under UV light. We will not, the bands will not be visible. And after this, this is gel electrophoresis. Like this is the actual gel electrophoresis, how it is done. So this is the liquid gel, and it has the temperature above 40. It could be 50 or 55, and the ethidium bromide has been added to this gel, and after that or it could be like post casting. It can be done after electrophoresis as well. After at this stage it could be stained. So ethidium bromide, everything is added, and it could be poured in the casting tray. This is the casting tray. After that it will be after a few minutes it will the temperature will lower down, and the gel will be solidified. The casting tray is then placed in the tank, and the comb is moved out, and there will be wells created in the gel. And then the sample has been loaded over there, and after that electricity has been applied, and after that this has been moved out of here from here and put under UV light. In the UV light you can see the bands here. Here are the bands, here are the bands. So these bands and this look into this gel. If you can observe this gel, this is the gel is start from here to here, and you can see this area is bluish in color. This whole area is bluish in color, and this area is reddish in color. That means we have run the gel, the electrophoresis has been occurred, and the ethidium bromide move in this direction, and the DNA has been moved in this direction.
ठीक है, समझ आ रही है? Am I clear? Yes, sir. Who will explain? यस सर। सर ये जेल बोतल में लिक्विड फॉर्म कैसे रहेगी? तो टेम्परेचर तो लेस देन 30 होता है। नहीं, इसको like what we do, I will take 100 ml of water a buffer, 100 ml of buffer, and will add 1 gram of agarose. Mix that and then boil it. After boiling, wait for a while so that the temperature could lower down to 50, and it will still be liquid in form. And then pour it in the casting tray. You can also add we can also add ethidium bromide in there and mix that, and then pour into the casting tray, and it will solidify with time as the temperature reduces from below 40 or will reach 40. It will solidify, and after solidification you can see this gel. It's like this. Is it clear? This is now Yes, milky gel, and this is now before it was transparent. G, who will explain? Fareen is there? Fareen? Yes, sir. जी प्लीज एक्सप्लेन करें इसको, इस पूरे प्रोसीजर को। अच्छा, इस वाले को करूं सर कि पिछले वाले को भी करूं? इस वाले को कर दें जस्ट, क्योंकि पिछले वाला इसमें जो इथेरियम ब्रोमाइड है उसको हम कास्टिंग ट्रे में डालेंगे और फिर उसका टेम्परेचर कूल डाउन होने देंगे और फिर उसको जो है टैंक में प्लेस कर देंगे और कॉम्स रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपना सैंपल जब लोड कर लेंगे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सर, और फिर बैंड्स की सेपरेशन हो जाएगी। और फिर जब हम सर उनको यूवी लाइट के अंदर देखेंगे तो हमें 2 कलर्स नजर आएंगे, एक रेड और ब्लू, और उसमें बैंड्स नजर आएंगे। तो सर इससे पता चलेगा कि जो इथेरियम ब्रोमाइड है वो ऊपर चला गया और जो डीएनए के बैंड्स वो नीचे मूव कर गए। ठीक हो गया। ये डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं आपको ना, डिफरेंस इन द जेल कलर। यहाँ पे देखें ब्लू कलर है एंड दैट इज इन द रेड कलर, एंड दैट शोज के जेल रन हुई है। एंड ये इथेरियम ब्रोमाइड जेल के अंदर स्टेन हुआ है। ये पोस्ट स्टेनिंग नहीं है, पोस्ट ये प्री कास्टिंग वो है, डाई उसके साथ प्री कास्टिंग स्टेज पे ऐड की गई है। ठीक है, अगर पोस्ट कास्टिंग होती ना तो ये पूरा जेल जो है हम इथेरियम ब्रोमाइड में ऐड करते हैं और ये पूरा जेल जो है हमें रेड नजर आता, इस तरह रेडनेस हमें इसमें नजर आती पूरे जेल में। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes, Yes, Am I sir. clear to the whole class? That's good. Oh, yeah. Yes, And sir. okay, and next is polyacrylamide gel. So acrylamide monomers polymerize into long chains that are covalently linked by a cross-linker bisacrylamide. So for polyacrylamide gels, we will be having 2 things. One is acrylamide and the other is bisacrylamide. So acrylamide and bisacrylamide, they combine together, they cross-link together, and it will form a polyacrylamide gel. What will occur? Acrylamide, and it will be bound with the bisacrylamide, and the bisacrylamide will cross-link, means this a polymer of acrylamide, and this is a polymer of acrylamide, and these 2 polymers are like they are cross-linked by bisacrylamide. The red one shows bisacrylamide. Now one more thing, we will also be needing persulfate. Persulfate S2O8. So this persulfate is required, like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. There are 7 oxygen and required to bind to acrylamide. This acrylamide, ये इसको bind करवाने SO4 sulfate radicals will be there,
and these acrylamides will be then cross-linked by bis-acrylamide. In this way, so polyacrylamide gels are tougher than agarose gel. They will be tougher, and they cannot be break easily as compared to the agarose gel. And polyacrylamide is chemically complex as in production and use of the gel, and they are actually chemically complex than agarose. And next is preparing and pouring of gel that could be 5% to 18%. Previously agarose were 0.8 to 2%, and this is 5 to 18%. That means we will be needing more polyacrylamide for making the same size of gel. And determine the pore size, adjust total percentage of acrylamide, vary the amount of cross-linker. So we can adjust the acrylamide, we can vary the cross linkers. The more the cross linker, the pore size will be smaller. And initiate polymerization. How can we initiate polymerization? How we can do polymerize the gel? So there is one method known as chemical method, and in chemical method we can use ammonium persulfate, APS, and timid. So APS is actually an oxidizing agent, and timid will be used. So timid is actually the catalyst for polymerization. So in this polymerization, APS and timid will be used, and and these two chemicals, APS and timid, will polymerize this polyacrylamide gel. So there is one another method known as photochemical method. This photochemical method, by rule, photochemical, this is the photolight. It can it can do isomerization reaction. It can do bond forming reaction. So the bonds can be formed. The bond can even be broken with the photochemical reaction. So in this, we are actually using bond forming reactions and can initiate polymerization. But this chemical method is more frequent. We do use APS and timid in our daily experiments. Sorry. So next is electrophoretic separation. So we will be using electrophoresis then, and then is the number for analysis of the gel. So we can analyze the gel by staining, by autoradiography, followed by densitometry. So densitometry is actually the quantitative measurement of optical density in light sensitive material. For example, photographic paper, photographic film are due to exposure to light. So staining and autoradiography, and followed by densitometry. Through this we can analyze the gel. Previously we were analyzing the gel under UV. So agarose gel were visualized under UV, and for this we can use densitometry and blotting to we can also analyze the gels through blotting to the membrane. So we can blot these like gels onto the membrane, either by capillary or by electrophoresis, for hybridization, for arterioradiography, or immunodetection. So hybridization is, agar hamare paas, if we have a DNA, we can hybridize the DNA with a probe of another complementary DNA. So we can hybridize that, and we can detect the sequence. And autoradiography is by using radioactive elements, or immunodetection by using antibodies. If that is protein, we can use antibodies against the specific epitopes of the proteins. सर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे. Okay, and we have a small video. अगर हम ये video देख लें, it's important actually. If we could check this video. 2 या 3 मिनट की वीडियो है.
So आपको आवाज आ रही है वीडियो की? सर बहुत आहिस्ता आ रही सर है। बहुत कम आ रही है। यस सर। सर नहीं आ रही। Including Western blot analysis. Step in many protein analytical methods, including Western blot analysis, is to separate proteins by gel electrophoresis. The most widely used protein electrophoretic technique is SDS-PAGE, in which proteins are denatured and evenly charged by an ionic detergent so that protein migration through the gel is based only on their size. Thermo Fisher Scientific offers a wide variety of in vitrogen precast gels in different chemistries, percentages, gradients, and sample well configurations. Make sure you choose the right protein gel based on the size of your protein in your downstream applications. This video will show you how to separate proteins by using the Invitrogen Mini Gel Tank, which is compatible with a wide range of precast and pour your own gels, and the Invitrogen Bolt BizTris Plus Precast Gel, with a wedge-shaped well designed to enable the loading of sample volumes up to 60 microliters per well. To replicate what you see in this video, you will need Bolt LDS sample buffer, a Bolt mini gel, Bolt MES SDS running buffer, Bolt antioxidant, a mini gel tank, a Page Ruler Plus pre-stain ladder, a Power Ease power supply, and a gel knife. Inspect the mini gel tank by making sure that the electrophoresis tank is secure in the stand and that the cassette clamps are in place. The anode connector should be positioned in the middle of the tank. The fill line that is on the front of the tank should be facing you. Partially pre-fill the tank chambers that will be used by adding 1x running buffer until it reaches the cathode. Once the tank is set up, cut open a gel cassette pouch and remove the cassette from the pouch. Gently remove the comb either by sliding the comb up one side at a time or by using both thumbs to push both sides of the comb up simultaneously. Wash the cassette wells with running buffer and invert to remove any excess. Do this 2 more times. Make sure you remove the tape at the bottom of the cassette. In order to make the gel easier to load, place the gel cassettes in front of the cassette clamps in the tank with the wells facing toward you. Hold the gel so that it doesn't drop down all the way in the tank while pulling the cam handle forward. This will hold the gel firmly in place while you load samples and standards. If you're running 2 gels, repeat this for the other gel. Fill the wells of the gel with running buffer. Simply lower the pipette tip into the well and pipette the sample into the well. The front-loading, wedge-shaped wells make it easy to load samples using a standard pipette tip. Load the pre-stain ladder into a separate well in order to assess the relative molecular weight of the target proteins and monitor the separation during electrophoresis. After loading the samples and standards, carefully release the cassette clamp while holding the loaded gel. To prevent disturbing the loaded samples and standards, gently slide the gel down so that it rests on the bottom of the tank. Next, pull the cassette clamp forward. With the gel cassette and clamp secured, fill the 2 chambers of the electrophoresis tank with running buffer to the fill line. It is normal for buffer to overflow into outer chambers. For reduced samples, add 400 microliters of Bolt antioxidant to the cathode buffer chamber for better protein resolution. Place the lid on top of the tank and align the electrode receptacles in the lid with the corresponding electrodes in the tank. Push the lid down firmly. Connect the electrode cords to the power supply. Set the power supply to the appropriate run voltage and time. Bolt gels can be run at 200 volts and electrophoresis can be completed in as little as 20 minutes. Now, start the run. Bubbles appearing around the cathode indicate that the current is flowing. At the end of the run, as determined by time or when the die front reaches the foot of the gel, turn off the power supply, disconnect the cords, and remove the lid
by placing your thumb on the tank handles and pulling the lid up with your fingers. Remove the gel cassette from the electrophoresis tank by releasing the cam handle. Carefully separate the gel from the plates using the gel knife. Remove the foot of the gel and wells. The gel is now ready for Western blot transfer, Kumasi stain, or another protein analysis method. Find out more information about Invitrogen precast gels at thermofisher.com/proteingels. Polyacrylamide gel electrophoresis, and this is the gel cassette. Here will be the negative electrode chamber, and this cassette will be inserted over here, as we have checked in the video as well. And this is in the tank. The whole like setup will be processed in this tank. Now this is in the assembled tank. With the assembled tank will be containing this anode and that cathode is actually present in this cassette, and the anode will be here in the tank actually. So on this like, okay, so and here you can see the anode buffer and cathode buffer, they can be different. And now the sample injection into the wells, and then the power supply will be provided, and after that staining of the gel will be done. There are certain pre-stained samples as well. We can and specifically the ladder we can make them pre-stained. Okay, and next to it is, there are two types of buffer system. One is continuous and the other one is discontinuous. A continuous buffer system has only a single separating gel and uses the same buffer in the tank and the gel. Tanks and gel में अगर same buffer use करें तो उसको हम continuous buffer system कहेंगे. And the second one is discontinuous buffer system. A non-restrictive large pore gel called the stacking gel is layered on the top of separating resolving gel. It uses two buffer system. So हमारे पास जो है वो जो like system है, like हमारे पास हम जब जेल बनाते होते हैं तो इस जेल के दो पार्ट्स होते हैं. इसको ऊपर वाले जेल को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम यहाँ तक एक जेल बनाते हैं एक पोर्शन, और दूसरा the second portion is this one. So इस पोर्शन को हम कहेंगे stacking gel and this one will be known as resolving gel. यहाँ पे हम लोड करते होते हैं, means we load it here, load the sample in this gel, और ये ज़्यादा porous होता है, means कि इसमें pore size ज़्यादा होगा जेल का, और यहाँ पे ये जब मूव करेगा so ये जो है that will आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि like in discontinuous system we have two parts of the gel. The upper part will be known as stacking gel and the other part will be known as resolving gel. ठीक है, so stacking and resolving, the stacking gel will have large pore size and the resolving gel have smaller pore size, and this will restrict the movement more than this one. This will be for the loading purpose and this will be for the resolving purpose. इस वजह से इसको stacking gel कहते हैं और इसको resolving gel कहेंगे. इस part को समझ आ गई है? Yes, sir. And the next to it is the resolution obtainable in a discontinuous system is much greater than that obtainable in the continuous system. So discontinuous system जिसमें stacking और resolving gel हो,
मीन्स के जेल के दो पार्ट्स हों, स्टैकिंग और रिजॉल्विंग, तो वो जो है उसके रेजोल्यूशन जो है रिजल्ट्स की, दैट इज मोर देन इन द कंटिन्यूअस सिस्टम. एंड हाउ एवर द कंटिन्यूअस सिस्टम इज लिटिल बिट इजियर टू सेट अप. कंटिन्यूअस सिस्टम जो है वो एक ही जेल उसमें बनना है, so that is easy to go with. But the resolution and results are more preferred in discontinuous system. So जिसमें दो stacking और resolving gel बनते हैं, so दो type of gel बनते हैं, stacking और resolving, that is more preferred actually. So यहाँ पे आप देखें, so continuous in discontinuous buffer system, a pH 6.8, the protein are arranged in stacks. स्टैक्स में अरेंज होते हैं, और इसमें जो है विद क्लोरीन एज लीडिंग आइन. अब जब ये मूव करेंगे, प्रोटीन जब मूव करेंगे, सो इस जेल में ये देखें आपको एक येलो लाइन नजर आ रही है, ठीक है. above this yellow line, that will be known as stacking gel, and this will be the below this line, this will be the resolving gel. तो ऊपर जो है स्टैकिंग जेल है, एंड सेकंड जो है वो रिजॉल्विंग जेल है. सो जब प्रोटीन्स मूव करेंगी या मैक्रोमोलेक्यूल्स मूव करेंगे, सो क्लोरीन आयंस जो है दैट विल बी लीडिंग आयंस. इसने आगे मूव करना है, और ग्लाइसिन ने इसके बाद मूव करना है, दैट विल बी द ट्रेलिंग आयंस. सो क्लोरीन आयन will work as leading ions and glycine as trailing ions. ये और दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, and this will be the negative electrode, this will be the cathode, and this will be the anode. So glycine will be the trailing ion, and chlorine will be the leading ion. And with that the proteins or the macromolecules will move. ये जब move करेंगे साथ साथ, so अब देखें, so that will move beyond the proteins molecules. protein molecule heavier होते हैं, तो ये दोनों molecule, दोनों जो ions हैं, ये move करेंगे. glycine ये भी amino acid है, so that will move as a trailer ion, ठीक है. So and this in this way the protein जो है ये spread हो जाएंगे, and it will make bands, ये resolve हो जाएंगे gel में, and this will move out of the jelly, glycine and chlorine. अब यहाँ पे on the left side in the diagram, the this one is the negative electrode, this one is the positive electrode, and ये gel है. In this gel, there is two parts. There are two parts: the stacking gel and the resolving gel. This is again the same thing which has been shown here. And this is the sample wells. ये sample wells हैं. यहाँ पे sample load किए जाते हैं. And this one is now the whole of the gel is resolving gel. इसमें दो parts में divide नहीं करते. यहाँ पे stacking और resolving दो different components होते हैं gel के. Am I clear up till now? Yes, sir. Yes, sir. कौन explain करेगा? मैं कर देता हूँ सर. जी अजीम. सर यहाँ पे हम बफर सिस्टम्स की बेस पे हम देख रहे हैं कि किसने इन बफर्स हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं. तो एक कंटिन्यूस मैनर होता है, एक डिसकंटिन्यूस मैनर होता है. तो SDS पेज जिसमें कंटिन्यूस मैनर होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास एक ही तरह का बफर यानी जेल यूज की जाती है. सेपरेटिंग जेल जो होती है वो एक ही तरह की यूज की जाती है, यानी फ्रॉम द जहां से हम अपना सैंपल लोड करते हैं और हमारे रिजल्ट्स आते हैं. तो ये कंटिन्यूस यानी बफर सिस्टम होता है. तो इसमें एक ही स्मॉल पोर साइज की जेल होती है, रिजॉल्विंग जेल होती है. उसके बाद जो दूसरी होती है डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम, उसमें ये होता है कि हम दो जेल्स यूज करते हैं. एक होती है स्टैकिंग जेल और एक होती है रिजॉल्विंग जेल. ऊपर वाले पोर्शन पे जहां पे हमने अपना सैंपल लोड करना होता है, वहां पे हम स्टैकिंग जेल यूज करते हैं जिसका पोर साइज बड़ा होता है, और वो हम नेगेटिव यानी नेगेटिव पोलर साइड पे हम पुट करते हैं, क्योंकि वहां से और जब हम अपना सैंपल लोड करते हैं तो उसके अंदर से क्लोरीन आयन और ग्लाइसिन आयन जो होते हैं वो जेल को लीड करते हैं, तब जेल को लीड करते हैं रिजॉल्विंग जेल तक. तो उसमें ये होता है कि वो दोनों ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की वजह से वो रिपेल होते हैं आगे की तरफ, यानी डाउनवर्ड. तो
लार्ज पोर साइज में हमारा सैंपल इकट्ठा सा होकर नीचे तक आता है, लेकिन रिजॉल्विंग जेल के अंदर पोर साइज स्मॉल होने की वजह से हमारे पास बैंड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो हमारा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम में 2 तरह की जेल्स यूज होती हैं, अबव स्टैकिंग लार्ज पोर साइज, बिलो रिजॉल्विंग स्मॉल पोर साइज। अच्छा, Am I यहाँ पे clear, और sir? जी जी बिल्कुल गुड है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जेल में लार्ज पोर साइज होंगे और इसमें जो एक्राइलामाइड यूज किया गया है दैट इज 5% होगा। यहाँ पे जो है वेरिएबल पोर साइज होंगे दैट वेरीज फ्रॉम 10 to 20%। यहाँ पे जो जेल यूज है वो ज्यादा है, मीन्स के एक्राइलामाइड विल बी मोर एंड पोर साइज विल बी स्मॉल, ठीक है। सो एंड यहाँ पे लोअर आयोनिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ विल बी मोर। पीएच इसका जो है वो 6.8 रखा गया था, इसका जो है 8.8 है, ठीक है। सो दैट दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ जेल्स। Okay, and next is agar this is native page, native polyacrylamide gel electrophoresis. So native page में क्या होगा, polyacrylamide support is used continuous system, that is single gel use किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी variation दिखाई गई है कि how proteins separate onto a gel. So these are large positive charged molecules, large हैं और positive charged molecules हैं macromolecules slowly and small. Okay, so and that is and here is large high positive charged molecules हैं, these one, so that are high positive charged and in the positive charge ज़्यादा है, so that will move faster। और यहाँ पे ये small high positive charge, these are small high positive charge, so ये जो है ये कैथोड के करीब होंगे, they small होंगे, that will move even more faster। And these red ones are small low positive charge, so positive charge कम है and small भी है, so that will be here in the intermediate। So अब यहाँ पे देखें, so they are positive charge, they are here, but they are so size के base पे भी ये separate हो गए हैं, means they are smaller in size, so they move faster, but they are large Sorry, I got internet problem. Class? Yes, sir. जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so okay class, देखें on this slide this is a representative gel
एंड यहाँ पे जो पिंक में दिखाए गए हैं, दे आर लार्ज पॉजिटिव molecules, proteins. So, and in the red one, in the red triangles, they are also positive charge, but they are small. So, and both have low positive charge. So they have low positive charge. So they will move slowly. But this will be different from this one. This will move faster because of the small size. Similarly, this will large in size with high positive charge, and this will move this will move slower due to high positive charge, so they'll move faster due to on the charge. They will resolve. The proteins will be resolved from each other, and no denaturant use. We will not use any denaturant. Proteins stay in the original conformation. So in the native page, we will do not use any denaturant to denature the proteins. And movement of the protein will depend on the intrinsic charge. That will be based on the charge and hydrodynamic size, means the size in a fluid. That will be depend on that. Am I clear? Yes sir. कौन explain करेगा? सर मैं कर दूं? जी प्लीज दुआ. सर यहाँ पे हमने सबसे पहले नेटिव पेज देखा था. ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है. इसके अंदर हमने 4 डिफरेंट काइंड्स की जो हमारी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे वो देखे थे. जो स्क्वायर में हमें शो हो रहे हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उनका हाई पॉजिटिव चार्ज है. जो आपके पास सर्कल्स वाले हैं वो आपके पास पर्पल पिंक कलर में शो हो रहे हैं, उनका लो पॉजिटिव चार्ज है. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमें सर्कल में शो हो रहे हैं बट उनका लो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो स्लोली मूव करेंगे. एक तो उनका क्योंकि साइज बहुत बड़ा है और दूसरा उनके पास चार्ज भी लो है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव की तरफ स्लोली मूव करेंगे. दूसरे में हमारे पास जहां पे हमें स्क्वायर शो हो रहे हैं उसके अंदर ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल जरूर है पर उनका हाई पॉजिटिव चार्ज है. मींस ये कि वो एज कंपेयर टू सर्कल वाले वो थोड़ा फास्ट मूव करेंगे. उसके बाद अगर हम रेड ट्रायंगल्स देखें तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल प्रोटीन्स है, लेकिन उनका जो चार्ज है वो लो है, वो भी फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू स्क्वायर वाले. जो लास्ट में है हमारे पास ग्रीन वाले वो स्मॉल, एक तो वो स्मॉल है उसका साइज और दूसरा हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो एज कंपेयर टू अबव 3 वो फास्टर मूव करेंगे इन जेल. तो इसमें हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज हमारी जितनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो रिजॉल्व हो सकती हैं. हमने इसके अंदर कोई भी डीनेचरेंट यूज नहीं किया और प्रोटीन्स जो है अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन में इसमें इस जेल पे रिप्रेजेंट की गई हैं. और मोमेंट 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो इंट्रिंसिक चार्ज पे कि चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना फास्टली मूव करेगी प्रोटीन, और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक साइज पे कि जितना साइज ज्यादा होगा उस हिसाब से वो उतनी स्लोअर मूव करेगी. जी जी. Okay, should we move further? So next to it is SDS denaturing page. और उसमें क्या होगा? That one was native page, and this one is denaturing page. इसमें denaturant use किया गया है, surfactant use किया गया है, and that is sodium dodecyl sulfate is an anionic detergent which denatures secondary and non-disulfide linked tertiary structure by wrapping around the polypeptide backbone. So इसका ये मतलब हुआ कि SDS ने कन्फर्मेशन को भी चेंज करना है. प्रोटीन जो ओरिजिनल जिस कन्फर्मेशन में है, जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को इसने चेंज करना है SDS ने. ठीक है. सो ये ओरिजिनल कन्फर्मेशन में नहीं रहेंगे और यहाँ पे नेटिव स्टेट में, ये नेटिव पेज में ये ओरिजिनल कन्फर्मेशन में मूव करेंगे. अब जो है अगर इस डायग्राम को देख लें तो प्रोटीन विथ 2 सबयूनिट्स A एंड B जॉइंट बाय अ डाइसल्फाइड ब्रिज. तो ये डाइसल्फाइड, हम सिस्टीन का और सिस्टाइन का तो पता है ना, हम पढ़ चुके हैं ना कि सिस्टीन क्या है, सिस्टाइन क्या है.
तो डाइसल्फाइड ब्रिज जब बनेगा दो रेजिड्यूज के दरमियान, सो अब ये देखें जो सब यूनिट ए और सब यूनिट बी, दे आर ब्रिज टुगेदर विद डाइसल्फाइड ब्रिज। सो अब इसमें क्या होगा कि एंड दिस इज अ सिंगल प्रोटीन सब यूनिट, ये सिंगल ए बी और सी, ये सी जो है ये सिंगल सब यूनिट है, ए बी जो है ये डायमर बना रहे हैं। सो इन दोनों को क्या किया गया, हीट विद SDS एंड मर्केप्टोएथेनॉल, मर्केप्टोएथेनॉल और SDS से हीट किया गया। सो उस केस में क्या होगा कि होल ऑफ द सब यूनिट इज होमोजीनियसली नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। so SH and SH will form and it will the disulfide bridge will bond and negatively charged SDS molecules जो हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। अब क्या होगा अगर इनको हम जेल पे रन करते हैं, सो इसको जब जेल पे रन किया, सो पॉलीएक्राइल एमाइड जेल को, इसको भी पॉलीएक्राइल एमाइड जेल पे रन किया, सो वी विल गेट टू बैंड्स, वन इज this A, this will move faster, this A will move faster because this is smaller in size, this has been represented as smaller in size, and this is the protein B, this is the subunit B, this one। so subunit B है ये, और ये स्मॉलर, ये लार्जर इन साइज होगा तो ये मूव स्लोअर करेगा। एंड दिस इज एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे दिखाया भी गया है कि दिस कुड बी द इंटरमीडिएट बिटवीन दिस टू। सो ये इन दोनों के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा बिकॉज द साइज इज ऑन दैट लोकेशन। ठीक है, and next to this is, so SDS confers net negative charge to the polypeptide in proportion to its length, and when treated with SDS and reducing agent mercaptoethanol or dithiotitol, the polypeptides become rods of negative charges with equal charge density are charged per unit length। तो per unit length में जो है वो equal charges होंगे इनके। So in SDS-PAGE, migration is determined not by intrinsic electric charge of the polypeptide but by the molecular weight। So जो माइग्रेशन है वो इंट्रिंसिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी ये सारा कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना। सो ये अब चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे। अब एम आई क्लियर? यस सर। सो नेटिव जो है, नेटिव विल डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक चार्ज and the size, hydrodynamic size, and the denaturing page will depend on the molecular weight actually। कौन एक्सप्लेन करेगा? Who will explain? सर इसमें ये सारी कंटिन्यूअस बफर इस्तेमाल हो रहे हैं या सर ये डिसकंटिन्यूअस? नहीं, वो तो हो गया हुआ ना, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे डिसकंटिन्यूअस हो, ये दोनों अप्लाई होते हैं सर? ये इस पे दोनों अप्लाई होते हैं। असल में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का फायदा ये है, डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि लाइक यहाँ पे आके यहाँ पे इजीली आएंगे, यहाँ पे फिर रिजॉल्व होंगे, वो सेम इसी पे भी होगा, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये इनके रिजल्ट ज्यादा रिफाइन होते हैं इनके रिजल्ट, बाकी सिस्टम दोनों सेम है, जेल पे सेपरेशन सेम ही होगी दोनों में। ओके सर, ठीक है। So who will explain this one? SDS denaturing page? अगर नहीं कर रहा सर मैं कर देता हूँ। अजीम आप कर चुके हैं ना। अनाया इज देयर? असल में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और भी लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन क्लास में और लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? अनाया इज देयर? अनाया मंजूर? फरीन खुरम इज देयर? फरीन? यस सर। जी ये सर इसमें ये बताया कि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं SDS और मर्केप्थेनॉल। सर उसमें जब हम हीट करेंगे अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो सर वो उनको डीनेचर कर देगा उनके इर्द गिर्द रैप करके, और सर फिर उन पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इक्वली।
और फिर जब हम उनको सर जेल पे रन करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो सर उन्होंने बताया कि वो चार्जेस के बेसिस पे मूव नहीं करेंगे, वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे मूव करेंगे। जी ठीक हो गया। Okay, and next to it is so the sample buffers, the sample buffer proteins, the sample buffer contain ionizable tracking dye using bromophenol blue. So bromophenol blue use करेंगे that allow the electrophoretic run to be monitored. So ये ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज़ करते हैं, इसमें ये क्या करेगा, ये हमें ट्रैक करके देगा कि प्रोटीन जो मैक्रोमोलेक्यूल है वेयर इट हैज़ रीच नाउ. सो sucrose are glycerol that give sample solution density, thus allowing the sample to settle easily through electrophoresis buffer to the bottom when injected into the well. So इस ब्रोमोफिनॉल ब्लू में सुक्रोज या ग्लाइसरोल ऐड करते होते हैं ताकि ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको सेटल डाउन करें. जब हम लोड करते हैं वेल्स के अंदर तो बाज़ औक़ात ये वापस डीएनए या प्रोटीन्स जो हैं वो वापस बाहर आ जाते हैं. सो उसके साथ उसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्लाइसरोल या सुक्रोज ऐड करते हैं डाई लोडिंग डाई के अंदर, सैंपल बफर के अंदर. सो इसने सेटल डाउन करना है उसको सैंपल को ताकि वो वेल्स के अंदर बैठ जाए और फिर वो रन हो. एंड बफर नेटिव जेल ओनली. अब जो बफर है वो नेटिव और डीनेचरिंग जेल्स में क्या डिफरेंस होगा कि नेटिव जेल ओनली 1 मोलर ट्रिस सीएल और पीएच उसका 6.8 होगा. डीनेचरिंग जेल जो है आल्सो कंटेन्स एसटीएस and beta mercaptoethanol are dithiotritol. So ये डीनेचरिंग जेल्स में ये होंगे और नेटिव जेल में सिर्फ और सिर्फ ट्रेस मौजूद होगा एंड दैट्स इट. एक्सक्यूज मी सर, और जी जी ये डीनेचरेटिंग जेल में ट्रेस क्लोरीन होगी? हाँ, इसमें तो डीनेचरिंग में ये तो होगी ना, ट्रेस सीएल तो होगा उसमें उसके साथ जो है ना एसटीएस या बीटा मर्केप्टोएथानोल और डायट्रिटोल होगा. ठीक है, वो ये तो जेल का पार्ट है, ये नॉर्मल जेल है. ठीक है, और लेकिन डीनेचरिंग में ये एडिशनल है SDS और बीटा मर्केप्टोएथानोल. ठीक है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद स्टेनिंग की जाती है जेल्स की. सो प्रोटीन्स आर स्टेन्ड फॉर विजुअलाइजेशन. सो डीएनए एगरोस जेल में स्टेनिंग पहले भी की जाती है, लेकिन जो प्रोटीन जेल्स हैं उसमें स्टेनिंग बाद में की जाती है. और उसमें क्या होगा कि कोमोसी स्टेनिंग है, सिल्वर स्टेनिंग है, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग है. सो ये 3 टाइप्स ऑफ स्टेनिंग है दैट इज कॉमन. सो स्टेप इन्वॉल्व्स क्या है, अ वाटर वॉश to remove electrophoresis buffer and SDS from the gel tank, or an acid or alcohol wash to addition or fix the gel to limit diffusion of protein bands from the matrix, and then treatment with staining reagent to allow the dye or chemical to diffuse into the gel and bind to or react to the proteins, and then de-staining to remove excess dye from the gel matrix background. So सबसे पहले हमने जेल को निकालना है. ठीक है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाए, हमें पता चल जाए कि रन हो गया हुआ है, उसके बाद हमने इसको स्टेन करना है. स्टेनिंग के बगैर हमें बैंड नजर नहीं आएंगे. ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वॉश करना है जेल को ताकि बफर रिमूव हो जाए और उसके साथ जो अटैच है या एसडीएस जो है वो अगर अटैच है तो वो रिमूव हो जाए. फिर उसके बाद अल्कोहल वॉश या एसिड वॉश to fix the gel to limit diffusion of protein band ताकि बैंड्स जो हैं वो बाहर ना निकलें. ठीक है, और देन ट्रीटमेंट विद द स्टेनिंग रिएजेंट. उसके बाद स्टेनिंग रिएजेंट ऐड करते होते हैं तो डाई और केमिकल जो है वो जेल के अंदर डिफ्यूज कर जाए. ये तकरीबन 2-3 घंटे के लिए करते होते हैं और उसके बाद डी स्टेनिंग सोल्यूशन में ऐड करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो रिमूव हो जाए और जो प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है वही रहे बस. ठीक है, एंड दैट्स इट. ठीक है, इसकी समझ आ गई है? यस सर. यस सर. कोई बताएगा, इसको एक्सप्लेन करेगा?
मैं कर दूं? जी 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 कर सर अब हम लोगों ने आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसकी स्टेनिंग करनी है। प्रोटीन जेल की स्टेनिंग आपने बताया था बाद में होती है। 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कमर्शियल स्टेनिंग कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग कर सकते हैं, या हम फ्लोरेसेंट स्टेनिंग कर सकते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले जेल को बाहर निकालना है, उसे वॉश आउट करना है ताकि जो एक्सेस बफर है ना उसके ऊपर से वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने एसिड या अल्कोहल से वॉश करना है ताकि जो जेल के अंदर बैंड्स हैं वो फिक्स हो जाएं और जो प्रोटीन्स हैं वो सही तरीके से अंदर फिक्स्ड रहें। उसके बाद हमने इसे किसी भी स्टेनिंग रिएजेंट से हम लोगों ने इसे स्टेन कर लेना है। फिर उसके बाद इसे 2 से 3 घंटे जिस तरह आपने बताया था कि लगते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने इसे फिर डीस्टेन कर लेना है ताकि एक्सेस डाई है वो रिमूव हो जाए और जहां जहां पे सिर्फ हमारा प्रोटीन है ना वहां वहां पे हमारी डाई जो है प्रेजेंट रहे और हम इजीली उसे विजुअलाइज कर सकें। ठीक हो गया। ये क्लास समझ आ गई है? सर ठीक हो गया। So next is commercial staining है। ये चलिए coming class में कर लेंगे। In the coming class we will conclude, we will like speed up करेंगे काम को और इसको conclude करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, up to now कोई question अगर हो? सर जी जी सर प्रोटीन स्टेनिंग में तो हम बाद में स्टेन करते हैं ना सर। वैसे जब हम अपने मतलब हम पहले ही कोई स्टेन रिएजेंट बीच में डाल देते हैं जेल के, तो सर उससे डीएनए की स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी? क्योंकि जेल तो क्योंकि जो भी हमारी डाई होती है वो तो इंटरकलेट करती है डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स में। हाँ, वो असल में जो इथीरियम ब्रोमाइड है वो अगर ये देखा गया है कि अगर हम प्री स्टेन करते होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले अगर हम डीएनए को स्टेन कर लें, जेल को स्टेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि डीएनए ने इलेक्ट्रो जो बैंड वो जो है ना लाइक इथीरियम ब्रोमाइड ने अपोजिट साइड में जाना है डीएनए के, ठीक है, और सिर्फ डीएनए के अंदर इंटरकलेट हो जाएंगे, बाकी जो है वो रह जाना है। लाइक अगर इसको मैं इस तरह शो कर दूं, जी जी वेट फॉर अ व्हाइल। लाइक अगर इथीरियम ब्रोमाइड अगर डीएनए इस तरफ जा रहा है ना तो इथीरियम ब्रोमाइड विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो जो डीएनए के बैंड्स हैं उन डीएनए के बैंड्स में लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव दिस डीएनए बैंड, तो उसमें डीएनए के बैंड में सिर्फ और सिर्फ वो इथीरियम ब्रोमाइड रहेंगे जो इंटरकलेट कर गए हैं। बाकी जो जेल है द जेल विल बी ब्लू इन कलर, बाकी जेल विल बी ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर मैं डीएनए को रन कर दूं इसमें और उसके बाद मैं स्टेनिंग कर लूं, रन करने के बाद स्टेनिंग कर लूं, तो वो पूरी की पूरी जेल जो है दैट विल बी रेड इन कलर, वो पूरी जेल जो है वो रेड कलर होगी। यहाँ पे जो बैंड है डीएनए का, ये डीएनए बैंड जो है वो ज्यादा रेड कलर होगा और एंड दिस विल आल्सो बी रेड इन कलर। सॉरी, जो रेस्ट ऑफ जो जेल है दैट विल आल्सो बी रेड इन कलर। So this will be red, this will be red, but this will be, the intensity will be more here. So ये जो है ये ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन इसमें होती है। Therefore people do prefer this one, ठीक है। एक और बेनिफिट है सर इसका, जहाँ तक आपकी क्वेश्चन की बात है कि ये स्लो मूव करेगा, तो हो सकता है ये इसको कंपेयर लोगों ने नहीं किया हुआ, शायद ये मैं देख लूंगा, शायद ये स्लो मूव करेगा क्योंकि पार्शियल चार्जेस दोनों लाइक एक दूसरे को नेगेट करेंगे, तो ये मैं देख बताऊंगा। वैसे ये पॉसिबिलिटी है लेकिन नॉर्मली इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हिंडर करे डीएनए को। जी जी सर जी जी ऐसे सर इसमें लोग कहते हैं कि टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सर अगर देखा जाए तो ये टाइम बचाता है सर। अगर हम एक डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और बाद में हमारा वो रिजल्ट अगर ठीक नहीं आता तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है दोबारा करने से। इसमें ये होता है कि हमें साथ साथ थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो
डीएनए है वो इलेक्ट्रोफोरेस यानी रिजोल्व हो रहा है साथ साथ। अच्छा, ये भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर हम ये जेल जो है बाद में स्टेन करते हैं तो उसका ये जो हम पहले ये बात कर चुके हैं कि ये पोटेंशियल कार्सिनोजन है एथिलियम ब्रोमाइड। तो इस जेल को अगर हम जेल बनाने से पहले लेंगे ना, तो जेल बनाने से पहले स्टेप क्या होता है कि एक बॉटल लेते हैं और वो बॉटल जो है, अच्छा, एक बॉटल लेते हैं और वो बॉटल जो है उसमें हम इथिलियम ब्रोमाइड ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। इथिलियम ब्रोमाइड 2 या 3 माइक्रोलीटर इथिलियम ब्रोमाइड ऐड कर लेते हैं और एंड दैट विल और वो हम पोर कर देते हैं इस कास्टिंग ट्रे में एंड द जेल इज फॉर्म। उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा नहीं है। अब अगर हमने इथिलियम ब्रोमाइड के बगैर जेल बना दिया है तो अब फिर उसके बाद क्या होगा, इस जेल को उठा के एक बड़ा सा टैंक हम लेते हैं और उस टैंक के अंदर हम इथिलियम ब्रोमाइड सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है। वी ऐड इथिलियम ब्रोमाइड सोल्यूशन और वो इथिलियम ब्रोमाइड सोल्यूशन जब उसमें ऐड करते हैं फिर हम ये जेल जो है ये उसमें ऐड करते हैं और फिर ये शेकिंग पे रखते हैं 3-4 आवर्स के लिए। सो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कांटेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि शेकिंग के दौरान जो है वो दी इथिलियम ब्रोमाइड कैन स्प्लैश आउट और उसमें लाइक कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दैट्स बेटर टू यूज़ दिस वन। और लोग तो आजकल इथिलियम ब्रोमाइड को लाइक यूज़ नहीं कर रहे, लोग डिस्करेज भी कर रहे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। लेकिन अगर यूज़ करना भी है तो बेटर टू यूज़ before pre-staining, before the gel to before electrophoresis actually, ठीक है। वो और स्पीड की जहाँ तक बात है तो शायद स्पीड कम हो लेकिन वो ज़्यादा ऑब्जर्वेबल स्पीड नहीं होती, लाइक इतनी चेंज आप उसको वो लाइक ओवरकम करने के लिए यू कैन गिव मोर वोल्टेज, आप उसको वोल्टेज ज़्यादा दे दें, आप बिल्कुल लाइक कम वोल्टेज पे ना रखें, ज़्यादा कर दें, ओके सर। so things can be adjusted with that। इस वजह से फील नहीं होता, अगर जब आप कर रहे हो तो उसको फील नहीं होता कि ये स्लो है। you can adjust with the voltage as well, the speed। सर ये वोल्टेज के रिलेटेड है सर, क्या हम वोल्टेज डिसकंटिन्यूअस रख सकते हैं, कभी ज्यादा दे दिया कभी कम? लोग करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि इनिशियली स्लो रखते हैं, ठीक है, ताकि सेपरेट हो जाए। अब एक दफ़ा ये बैंड सेपरेट हो जाए फिर स्पीड ज़्यादा कर देते हैं। Staining of protein gels. So the first of the stain that is more popular and most frequently used in labs is Comossi staining. And Comossi staining, that's most common, easy method, single step, ready to use reagent. And if you can see the gel, this will be look like this. So there are like two types of like Comossi staining. One is R and the other one is G. The R means, okay, so uses protein specific color dye, and that is Comossi brilliant blue, and that will be R250. The other one is G. So R means that is a bit red, like tints in the blue stain. So this will basically, this is Comossi brilliant blue strain. Blue means the bands will be looks like blue in color. And in acidic conditions, so how this stain will actually stain the protein. So in acidic conditions, so we will add some acetic acid and methanol with the actually this is glacial acetic acid. So glacial acetic acid and the methanol with the Comossi brilliant blue when we make the dye, and there's Comossi dye that in that acidic condition that will bind to the basic and hydrophobic residues of the proteins. So when we stain the gel, the Comossi brilliant blue will bind in acidic conditions, that will bind to the
basic residue of the proteins in the gel. So now we have completed the electrophoresis, and now the stage for the staining has come. So now when we apply the stain, the Camosi stain, it will bind to the hydrophobic and the basic residues of the protein. So where there are hydrophobic residue in the proteins, that will bind there. Where there are basic residues in the protein, that will bind there, and we will get this type of binding patterns. So these are the protein patterns present in the gel, and we will visualize the presence of the protein in the gel at specific sizes. So on this scale, you can see this is actually a ladder, a protein marker actually, and this marker, we know the size of the protein. So this size is at 250 kilodalton, this is 130, this is 100, this is 70, this is 55, 35, 25, and so on. So if our desired protein, if our desired protein is like this is like 20 kilodalton, so this will be like here. So in comparison with the size here, we can locate our protein band, and this band now these are the washing steps, and now this is the purification steps. That now these are washing and elution step. So this very specific band has been purified from the rest of the mixture of the different protein bands. Am I clear? सर इल्यूशन का क्या मतलब है इधर? Elution is there may be in certain cases we use resins, we use some if we have nickel chromatography, and after that the protein, the specific size of the specific proteins that will bind there. If that has histidine tags in our protein, that will bind there, and then washing steps, and then we will elute our specific protein. Like say for instance, we have a protein, and we have a protein, a recombinant protein, and that protein, we know we have attached a histidine tag with that protein. Now we have multiple of these proteins, if I could draw here. So we have different proteins. We have proteins, and we need to purify this very specific recombinant protein from a mixture. So it has a histidine tag. This histidine tag has affinity for, we have already talked about this. This has affinity for the nickel or metallic, any metallic component. Also, we have nickel, and this tag, histidine tag, this will bind with the nickel, and the rest of the proteins present in the mixture, that will not bind to the nickel. So in this chromatography, only those proteins that has histidine tags, that will bind with the nickel, and we can wash the rest of the unattached proteins. They will wash out, and then after washing, we will be having a nickel attached with these specific types of recombinant proteins. Now we need to elute these specific proteins from the nickel. We need to separate those proteins. Now they have been separate from for instance, from the nickel, and that has been eluted out. So this one, this band and this band, so they have been eluted out, and we get a specific band rather than these ones. समझ आ रही है? समझ, हमने डिजायर प्रोडक्ट हासिल कर लिया इससे. Yes, exactly. इसी तरह. Similarly, we can elution को simple समझ लें कि अगर हमने DNA को हम क्या करते हैं नॉर्मली, DNA को कॉलम से पास करते हैं, ठीक है. DNA को जब कॉलम से पास करते हैं, we are talking about here proteins, but the elution is a generic term. DNA को कॉलम से पास करते हैं, तो DNA, सारे DNA जो हैं वो कॉलम के साथ बाइंड हो जाते हैं.
ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि वॉशिंग स्टेप है। वॉशिंग स्टेप में क्या करते हैं कि लाइक एथेनॉल, और वो पास आउट करते हैं, तो जो अनबाउंड डीएनए या अनबाउंड रेजिड्यूज हैं कोई भी, तो वो इल्यूट आउट हो, वो जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे। देन वी विल टेक द होल दिस ट्यूब, और फिर उसमें क्या करेंगे, वी विल ऐड वाटर। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, एंड व्हाट विल वाटर डू, water will okay we will add water, or and the DNA has affinity for water, and it will elute the water from the column, and we will get only the pure DNA. So अगर हमें pure DNA चाहिए, so we can elute in that way. ठीक है, so we will get that, and if we run that on the gel, we will have a specific band. But this was for DNA, but I am talking about elution step. So elution is after purification, we can elute out the DNA from some solid support. ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and after that can detect as little as 8 to 10 nanogram per band for some proteins, and 25 nanogram per band of most proteins. So we are talking about Comasi brilliant blue stain. So this Comasi brilliant blue stain, what is its efficiency? It can Omema. Okay, so it can detect as little as 8 to 10 nanogram per band for some proteins, and 25 nanogram per band for most proteins. So normally ये क्या करता है, like अगर हमारे पास एक बैंड में प्रोटीन की कंसेंट्रेशन 25 नैनोग्राम है, तो ये उसको इजीली स्टेन कर देता है, मीन्स के वो कलर दे देता है हमें। एंड अगर ये 8 to 10 नैनोग्राम भी हो, तो ये उसको स्टेन कर देता है। इससे कम हो तो ये फिर स्टेन नहीं करेगा नॉर्मली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट no chemical modification. So normally the concern is that either Comasi stain will make some modifications in these proteins. If I want to use this protein for some other processes, and I don't want to have some chemical modification in this protein, because I want to have this protein in the original conformation, I have to use them for further processes. So I don't want to make chemical modifications. So this statement says that Comasi stain is they will not induce any chemical modification of the protein. So make sure that they will not make any modifications, and proteins can be completely de-stained, that can be completely de-stained after visualization and recovered for analysis by mass spectroscopy. So if we want to go for MS, or for going for sequencing, so Kamasi brilliant blue can be relied upon. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Who will explain? Sir, excuse me, sir. Sir, my No chemical modification, sir. Mean कि हम उसके बाद प्रोटीन में क्या किस तरह की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो ये नहीं करने देती? अच्छा, नहीं, इसका ये मतलब है कि जो कमर्सी ब्रिलियंट ब्लू स्टेन है, ये प्रोटीन में चेंजेस नहीं लाती, ये इसे जस्ट विजुअलाइज कर देना है, एंड ये इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगी, लाइक फॉस्फोराइलेशन या इस तरह की मॉडिफिकेशन। अंडरस्टूड सर, मैं समझ रहा था कि शायद बाद में हमें कुछ प्रोसेस हो जिसमें वो हमें ना करने, तो सर चले गए।
Sorry, I got problem with my system. It got shut down in Norway. I don't know why, but okay. So Azim, you got it Yes, sir. from. Understand. I understand. Okay, that's good. That's good. Okay, so next is silver staining. So this was about Kamasi's brilliant blue stain, and the next is silver stain. And silver stain is more sensitive, as low as zero point 0.5 nanogram per band. So it can detect 0.5 nanogram of the protein band. So before this, it was like it can normally detect 25 nanogram or minimum of 8 to 10 nanogram. But here, if you can see, it will detect even lesser amount in 0.5 nanogram band. It will detect, the silver stain will detect. So it means this is more sensitive. A colorimetric method for means color-based method for detecting total protein, but have several steps. So before this, it was a single step procedure. This is silver stain is has multiple steps. Involves the deposition of metallic silver onto the surface of a gel at locations of the protein bands. So it will deposit metallic silver from silver nitrate, and that will convert that silver nitrate into a metallic silver and deposit those into with the protein and if you can see here, silver ions from silver nitrate in staining reagent interact and bind with certain protein functional groups. Where they will interact in the protein, they will interact with the protein functional groups. The strongest interaction occur with the carboxylic acid. So the protein has carboxylic acid, and these silver ions, these silver can interact with this carboxylic acid of aspartic acid and glutamic acid. And imidazole present. This is imidazole structure, and this is C3N2H3. So this is imidazole, and imidazole is present in histidine. And sulfhydryls, this is sulfhydryl, means the thiol group containing amino acid cysteine. So and amines, the amines like lysine. So these functional groups, the silver ions, they interact and they tightly bind with these functional groups, and they in a result, we can get the silver stain. And various sensitizers and enhancers reagents like glutaldehyde or formaldehyde, they are essential for controlling the specificity and efficiency of silver ions binding of proteins and effective conversion and bound of the bound silver to metallic silver. So the bound silver can be converted into metallic silver, and in that way, there are certain enhancers, glutaldehyde and formaldehyde, and they can more efficiently and increase the efficacy and specificity of these silver staining. Um, and the development process is essentially the same as for photographic film. So photographic film or these proteins, the staining of these proteins, that is similar. And silver ions are reduced to metallic silver, resulting in brown black color. So we will get brown black bands. Previous to this, we got blue bands, and therefore Kamasi Brilliant Blue was named, and that was the blue stains. And now we will get brown black color stains. And here we go. This is actually the staining with silver. So this is silver stain. The bands are brown black color, and if you can see, this is silver ions. They are converted into metallic silver, and they actually bind with the protein, and that's it. Am I clear on this? Yes, sir. Yes. Sir,
सर जी एक जी दफा मेटालिक सिल्वर का दोबारा बता दें कि बाउंड सिल्वर से मेटालिक सिल्वर में किस तरीके से होंगे। अच्छा, ये एक्चुअली मैं इसकी डिटेल में नहीं गया। ये जो है इसकी रिडक्शन होती है, और ये जो है ना ये ये जो आयोनिक सिल्वर है दैट कन्वर्ट्स इनटू मेटालिक सिल्वर, ठीक है। एंड उसमें ये है सर कि लाइक ये जी जी इसमें डायग्राम से तो ये शो हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, हाइड्रोजन एटम्स लूज हुए हैं हाँ हाँ और एग्जैक्टली ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना, सो दैट विल बी रिडक्शन। और ये जो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जो है ये इस तरह रह जाते हैं, दिस विल बाइंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। दिस विल बाइंड एंड दिस विल बाइंड। सो ये जो है ये उसके साथ बाइंड करेंगे। ये असल में एक और स्ट्रक्चर था लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इस वजह से मैंने वो दिया नहीं था। जस्ट आई वांट टू फोकस ऑन द स्टेनिंग, कि जस्ट मैं स्टेनिंग को फोकस करूं, बाकी चीज़ों में हम ना जाएं। ये एसोसिएटेड चीज़ें थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने ये दिखा दिया कि कम से कम ये हमें पता चल जाए कि ये कन्वर्ट होता है, लाइक इसने मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होना है, एंड दैट मेटालिक सिल्वर that will actually stain the protein. This will actually bind with the protein. ठीक है, सर this is जी जी सर एक रीजन ये भी हो सकती है कि जो आयनिक सिल्वर जो मेटालिक सिल्वर में चेंज होता है, तो मेटालिक की प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस, तो इस वजह से शायद स्टेनिंग होती हो। exactly you are right exactly that's good. And who will explain the slide actually? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन हो जाए दोबारा। मैं कर देता हूँ जी जी प्लीज जी प्लीज। Okay, we are using actually staining of protein gels whose actually 0.5 nanogram, for example, very little protein bands, more sensitive, and we use colorimetric method for detecting this, and we are using actually a metallic silver, any silver into metallic silver. It involves the deposition of metallic silver, and in this case, the metallic silver, any silver ions, then silver ions from the nitrates is actually bind to the functional group of the proteins. For example, the carboxyl acid group from like the aspartic and glutamic acid amino acids functional groups. And we also use various sensitizers and enhancers regions like glutaraldehyde or formaldehyde, because these are essential for controlling the specificity and efficiency, because we do not want any contaminations. So we want efficient results by using the silver interaction with our amino acids. That's why we're using these enhancers. And in this case, when our silver nitrate is attached to the functional group, it actually converts to the metallic. And due to, as Shafiq told us, that due to this lustrous property, it gives us the brown color, and we can understand, and we can take the photographic film, and through which we can see our results. That's great. So, any question in this, or we should proceed? Class? No, sir. ठीक हो गया. So, and okay, and next is fluorescent staining. So this one is the third of the staining. The first one was Kawase brilliant blue stain. The second one is silver stain. Now we have an option for the third one, and that is fluorescent staining. And a number of fluorescent stains for total proteins have been introduced in the recent years. And okay, fluorescent staining performance is fast and easy procedure. So this is faster, easy to use. So most useful fluorescent stains are those which excitation and emission maxima correspond to common filter setting of popular fluorescence imaging instruments. So we required
actually we need for first one is excitation and the other one is emission maxima. So emission, so excitation and emission, if these wavelengths are common filters, so that is more preferred because they are commonly available. Like we can, like we if we use fluorescent stains but we could not detect them with having instruments, with having our popular instruments, so that will be difficult for us. So now those fluorescent stains could be used and must be used, for which we have common filters available through which we can detect the excitation. We need to excite the actually the fluorescent compound if they are bound. So initially what we do, we add the fluorescent tags to the protein, and so those are, they will bind with the proteins, and then we need to excite those fluorescein, and after that we need these filters. So this filter will be used for excitation and emission, and after that we can detect them. And with popular fluorescence imaging instruments, so if that is compatible with that, so that's more feasible. And most fluorescence stains involve simple dye binding mechanism, so it will follow simple dye binding mechanism rather than chemical reactions that alter protein functional groups. So if you can observe the silver stain, they bind with the functional groups, so they will make changes. And so but here in fluorescence staining, it will follow simple simple dye binding mechanism, like just like Comosi brilliant blue, and therefore compatible with destaining. We can destain easily the protein, and protein can be recovered for downstream analysis by mass spectroscopy and other applications, MALDI-TOF, etc. So examples in Vitrogen, Cypro, Ruby protein, gel stain, Biorod, Flamingo, fluorescent gel stain, crypto protein stain. So they are all they are commercial protein stain, fluorescent stains. Am I clear? Yes, sir. So कौन conclude कर देगा इन तीनों को? Anaya is there. Anaya? Yes, sir. जी. सर ये फ्लोरेसेंस स्कैनिंग फ्लोरेसेंस बता दें चलें. सर फ्लोरेसेंस स्टेनिंग जो है इसके डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर सकते हैं, और ये फास्ट एंड इजी प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम, जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड होता है जिसके मतलब के जो स्टेन कंपाउंड्स हैं उनकी एक्साइटेशन और एमिशन होती है जो कि कोरिस्पॉन्ड करती है टू कॉमन फिल्टर्स, और फिर हम उसकी पॉपुलर फ्लोरेसेंस इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ना उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसमें ये सिंपल डाई बाइंडिंग मैकेनिज्म है रादर देन वो केमिकल रिएक्शंस जो कि उसको ऑल्टर कर देते हैं या उसकी कॉम्पोजिशन को या फिर उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देते हैं प्रोटीन्स के। और इसमें हम डीस्टेनिंग बाद में कर सकते हैं और प्रोटीन की जैसे उसी फॉर्म में हम रिकवरी कर सकते हैं जैसे वो होता है। और उसके बाद इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जैसे इनविट्रोजन, साइप्रो, रुबरी प्रोटीन जेल स्टेन, Biored, Flamingo, fluorescent gel stain, Krypton protein stain. ठीक हो गया, ठीक है, great. So after that, so how it will looks like. So this is the fluorescent gel. You can see this is the dot blot results. So and the fluorescence, the proteins, they are the fluorescent, and this is, you can see the fluorescence actually. So one can easily distinguish between silver stain, fluorescent stain, and Kamasi brilliant blue stain. Am I clear? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक हो गया. And next is gel documentation system.
So we can use some automated system in order to document our gel, in order to like to take and save image of gel after electrophoresis. So after electrophoresis and the when the electrophoresis is done, we can use gel documentation system, some automated system that could take the image of our gel, and that could quantify even and okay, so densitometric analysis of individual bands. So it can identify it can quantify the density of the individual bands. So and next is determining molecular weights of proteins by SDS-PAGE. So if we have SDS-PAGE, we can determine the molecular weights of the protein. So run a gel on a standard protein of known molecular weights along with the peptide to be characterized. So we already have talked about this. We can use a ladder and of known sizes, and with that known size we can run in our polypeptide, and we can measure the size of the our band of our protein from in comparison with the ladder, with the marker actually. And so after that, a linear relationship exists between log 10 of the molecular weights of the polypeptide and its RF value. So there is a really linear relationship between the molecular weight, the log 10 of the molecular weight of a polypeptide. So once we got the molecular weight, the log 10 of the molecular weight will be in a linear relationship with RF, and RF is actually okay. So RF is actually the ratio of the distance migrated by a molecule to that migrated by a marker dye front. So initially we put dye in the sample when it is running, and the sample dye actually what we do, we add initially when we want to run a gel. So what we do, if we have a gel like this, if we have a gel like this, and this will be the wells to load our sample. So what we do actually, we actually load our sample in these wells, and with these samples, with the sample, we also add a loading dye. Loading, we add what we add loading dye with our sample as well. Loading dye. Loading dye, and this loading dye, what loading dye will do, this will track and actually this will first it will it will help in loading the sample in the well, and it will also having a tracking dye, because with a naked eye we need to know where our sample has been reached. Like the loading dye, the tracking dye is here. Like if we see the bands, the dye here, so we will, what we will do, we will actually know that the sample has been reached up till here. So we need to stop electrophoresis, because we will get an idea that our protein has been reached up till here. The electrophoresis here has been done more than half, and if we apply more current, it will go out of the gel then. So we don't need that. If we don't need our bands to go out of the gel then, so we will stop the current, and we will take the gel to visualize, and then we will scan that. Am I clear? Yes, sir. So okay, so so what it says, the RF, the ratio of the distance migrated by the molecule, like our actual
protein molecule may be like here, like maybe our actual protein molecule will be here. Maybe it's after staining we will know, like our protein will be like here, and here it based on the size of the protein, but the loading die and the tracking die will be here. So this will mean the ratio of the distance migrated by the molecule, by our protein, to that migrated by marker die in the front, marker die front. So so is the ratio between the two, and that will be RF. So RF will be the ratio between the two. So this RF is the ratio between the two. And after that, the RF of the polypeptide to be characterized is determined in the same way, and the log 10 of its molecular weight is read directly from the standard curve. So from the standard curve, if we compare the two, this is molecular weight into, that is 10 raised to power minus 4, and this is the log of that, and this is the mobility. So the more the molecular weight, the less will be the mobility. If the molecular weight is more, the mobility is less. If molecular weight is less, the mobility is more. And this is actually SDS acrylamide gel electrophoresis. Am I clear? Excuse me, sir. जी सर एक बात समझ नहीं आई सर, जब हम डाई डालते हैं तो वो तो सर जो बैंड्स होते हैं उसमें मतलब इंटरकलेट कर जाती है और फिर हम उसको देखते हैं, तो सर हम इधर वो जो ट्रैकिंग डाई है उसको सेपरेटली क्यों देख रहे हैं? हमने तो वो देखने हैं. So नहीं, please, I thank you for asking this question. Actually जब हम दो किस्म के डाई यूज कर रहे हैं इधर, एक को हम कहते हैं लोडिंग डाई, जिसमें ग्लाइसरोल और शुगर कंटेंट होंगे जो हमारे सैंपल को डिपॉजिट करें इन द वेल, ताकि वो उस वक्त बाहर ना निकले. ठीक है, दिस कुड बी इन द डीएनए. प्रोटीन के केस, प्रोटीन्स आर हैवी इन नेचर. वी ओनली ऐड द लोडिंग डाई. हम लोडिंग डाई को ऐड कर देते हैं. लोडिंग डाई जो है दैट डजंट इंटरकलेट इन द प्रोटीन. लोडिंग डाई भी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, एंड दैट विल मूव इन द जेल. ये भी प्रोटीन की तरह मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटीन. इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, लेकिन ये फास्टर मूव करेंगी बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज. प्रोटीन्स जो हैं दे विल बी हैवियर. सो ये थोड़ा सा प्रोटीन से आगे मूव करेंगे. हमने ये जस्ट ये डिटेक्ट करना है कि जब हम जेल पे रन करते हैं तो ये प्रोटीन जो हैं ये जेल से बाहर ना निकल जाए. बाहर तो बफर मौजूद है ना, तो प्रोटीन जब बाहर निकल जाएंगे, ये प्रोटीन, इफ प्रोटीन गोज आउट सो इट विल बी ऑफ नो यूज. हमें जेल पे बैंड नजर नहीं आएंगे. हमने विजुअलाइज करना है एक्चुअली बैंड्स को. ठीक है, सो हमने ये इसको ट्रैक करना है. इस वजह से इसको ट्रैकिंग डाई कहते हैं, बिकॉज वी हैव टू ट्रैक द बैंड्स. इसकी ट्रैकिंग हमने करनी है कि ये कहाँ तक पहुंच गया वो होगा अभी तक. ठीक है, सो इस जेल पे जब हमने रन करना है तो फॉर इंस्टेंस यहाँ तक पहुंच जाए तो वी विल स्टॉप इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर. और जो दूसरी स्टेनिंग है, जिसकी जो कमासी ब्रिलियंट ब्लू है, सिल्वर है, फ्लोरेसेंस है, वो जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे. ये ट्रैकिंग डाइज जो है ये बाइंड नहीं करेंगे. ठीक है, okay, and if you can see this diagram, it is clear from there. This is our protein from this will be the top of the gel. This is the top of the gel. This is the bottom of the gel. So top of the gel and the bottom of the gel. Now these are different bands that we got in the protein mixture. And this is protein band A, which we required. The protein band A is here.
So this is a migration of the band. This move, this protein, this band move. We load the sample here, so it move from here to here. So this is the migration of the band. Now, also we will have different stand unresolved protein. So this is actually different stain. So here the stain is here, the dye is here. So the migration of the different, so that will be, it will migrate like this one, like this is the migration pattern is more. So it is here. So if we compare the two, that will give us what? That would give us the RF. A common abbreviation of relative mobility is RF. The F is in the superscript, in the subscript for, and that will be retention factor. So this is actually the retention factor if we compare both. Am I clear? So actually, retention relative mobility is equal to migration distance of bands. So this is the migration distance of band divided by migration distance of the die, the loading die actually, or the die front. So this will give us RF, and RF is actually, that is in linear relationship with the molecular weight of the polypeptide. This is log 10 of the molecular weight of the polypeptide, and RF will be in the linear relationship with the other. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay, and next to it is isoelectric point. So there is a pH at which there is no net charge on a protein, and this point is known as isoelectric point. And each protein has a characteristic isoelectric point depending on its amino acid composition. So isoelectric point actually depends on the amino acid composition in a protein. So when there is no net charge on a protein, positive and negative charge, they cancel each other. At that point, that will be called as isoelectric point. And isoelectric point will be depending upon the amino acid composition, and covalent modifications like glycosylation, phosphorylation, they affect actually isoelectric point of the protein. So if we have post translation modifications, they will and in the other protein we don't have post translation modification, the same protein will have different isoelectric points. So if one protein, if we have two same proteins, one has the modification, covalent modification, the other will not have the modifications. So these two proteins will have different isoelectric points, even though their amino acid composition are same. So initially in the first stage, the isoelectric point will depend on the amino acid composition. So which amino acid is there? That is important. And the covalent modification in those amino acids. So if we could see the diagram, in this diagram, this panel, this upper panel, that shows the pH from 1 to 5. So this is low pH, and second, third, fourth, and then is high pH. And if we can, if we goes on increasing the pH, there will be a point where pi is equal to pH. So this is so here is the pH is greater than the pi. So this is the isoelectric point lies here. So this is the pH is greater than the pi, and here the pH is lower than the pi. So this is hydrogen ion concentration is more than the pi, the hydrogen ion concentration is less than the pi. So here protein has net positive charged, so pH, so they have net positive charged, and here the protein has net negative charge. And at this point, the negative
and positive charged are equal. There is no net charge. The positive and negative charges are equal here. There are no like net charge on the protein. And if you can see these diagrams from here at this stage, this protein will be having more positive charge. Here it will be having like some of the negative charge, they accumulate here in this, and here the positive and negative charge, they equals, and here the negative charge are more, and here even more negative charge. So more positive charge to more negative charge as well. Am I clear on this slide? Yes, sir. Yes. अच्छा, इसको कौन explain करेगा? Because I want it to stop it here. We are मैं like करता हूँ सर. कौन करेगा? शुएब कर दे चलें. यस सर. जी सर, यहाँ हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ा. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली वो होता है जहाँ पर कोई नेट चार्ज नहीं होता, और उस सूरत में पीएच और पीआई जो है दोनों इक्वल होती हैं. और जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली होता है वो अमीनो एसिड की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. अगर कोवलेंट मॉडिफिकेशन में एक अमीनो एसिड कोवलेंट मॉडिफिकेशन में है और एक कोवलेंट मॉडिफिकेशन में नहीं है, तो दोनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होगा. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? जब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होती है तो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है. जब पीएच आइसोलेटेड पॉइंट से लो होती है तो नेगेटिव चार्ज होता है. दैट्स इट सर. ये टेबल में एग्जैक्टली ठीक है. सो यहाँ पे इस जी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सर, हम प्रोटीन को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या है सर? ये असल में आगे जाके हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हैं. ठीक है, वो असल में हम बेसिस थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद उस स्टेज पे आएंगे कि वी कैन सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. एक्चुअली हम आइसोइलेक्ट्रिक जी की जो माइग्रेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है ना जब वो उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता. एग्जैक्टली. सो डिफरेंट प्रोटीन के पीआई डिफरेंट होंगे. ठीक है, सो ये सिर्फ एक प्रोटीन का पीआई यहाँ पे लाई करेगा, दूसरे का यहाँ पे लाई करेगा, तीसरे का यहाँ पे लाई करेगा. सो आइसोइलेक्ट्रिक हम उनको डिफरेंट माइग्रेशन, ठीक है, मींस के एक ही मिक्सचर के अंदर अगर डिफरेंट प्रोटीन मौजूद है तो वो डिफरेंट जगहों पे वो स्टॉप कर जाएंगे अपने अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के बेस पर. ठीक है, एम आई क्लियर? जी सर, इसके अलावा जो हमारे पास लॉर्डिंग डाई के अंदर ग्लिसरॉल होता है उसकी भी तो मूवमेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे डिपेंड करती है. लोडिंग डाई के अंदर ये सर, जो हम लोग ग्लिसरॉल डालते हैं एसडीएस हाँ के अंदर, हम जब स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल के अंदर जब वो आता है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वजह से उसकी मूवमेंट चेंज होती है ना हमारे ग्लिसरॉल. हाँ, इसके बाद कुछ चीजें हैं वो अगर जब हम कवर कर लेंगे, ये क्वेश्चन उसके लिए उस जगह के लिए रख लें क्योंकि उस पर हम काफी पर डिस्कशन कर सकते हैं आगे जाके. हमारे पास कुछ चीजें हैं लाइक इफ अगर मैं गो थ्रू कर लूं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैरियर एम्फोलाइट्स और इमोबिलाइज्ड एम्फोलाइट्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो वहां पे हम इस क्वेश्चन को फिर कर लेंगे. ठीक है, फॉर नाउ वी आर लाइक हम जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे थे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या. आगे जाके हम करेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी फॉर दैट. ठीक है, सो आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो लाइक दो सेम चार्जेस हो, मींस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम हो ताकि न्यूट्रल वो हो जाए. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा. जस्ट यहाँ पे ये समझ लें बस. ठीक है, इज इट ओके? यस सर. यस सर. Okay, and actually we are running short of time. ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं. कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई बात सर. if you want to discuss. जी सर, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सर प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने के चांसेस कितने होते हैं सर? कि जैसे कि हम एक मीडिया से दूसरे मीडिया में हम ट्रांसफर तो कर रहे थे प्रोटीन पाइपेट्स के थ्रू, तो उसमें सर ब्रेक डाउन के चांसेस तो होते हैं ना?
सही enough ये बहुत ही like stable molecule है. If we compare that with the DNA and RNA, ठीक है, इसके chances इसमें इस तरह होते हैं कि like इसका temperature high हो जाता है जो electrophoresis के दौरान, तो फिर उसके साथ कूलेंट्स ऐड किए जाते हैं, वो टेम्परेचर जो है वो शायद डिग्रेड करें प्रोटीन्स को, इसकी कन्फर्मेशन को चेंज करें. लेकिन जहां तक प्रोटीन्स की बात है, प्रोटीन इज लाइक मोर स्टेबल एंड रिलायबल, काफी रिलायबल है. Isoelectric point, there is a pH at which there is no net charge on a protein. The isoelectric point is that point. Like here you can see, this is actually the strip showing the low pH, from low pH to the high pH, like 5 pH, and it has been classified as 1, 2, 3, 4, and 5. This is about pH. And now, here in the middle, there has been shown that this is PI, the isoelectric point, and that is equal to pH, and that is no net charge on the protein. Here there is no net charge, so the positive charge, the both charges, they equals, and here there is no net charge. Okay, here before this isoelectric point, the pH will be more than PI. So pH will be more than PI, so that will be more. So this is increasing pH, and here pH will be less. The PI will be more than the pH. So the PI goes on increasing. Here, if you can see, here the structure of the proteins. If we are talking about protein, so this is 1, 2, 3, 4, and 5. So these are the proteins here. Here at 1, at 2, at 3, at 4, and at 5. So these are the species present there. So here you can see all of these, like amino groups they are protonated, so there is a net positive charge, and there is maximum positive charge, the hydrogen sulfide and the HS and COOH carboxylic group, and that will be here. And after that, at this stage, you can see, and there is COO, and this is deprotonated, and here COO. So that means two of the carboxyl group, so they equals 2 protons. And here at 3 stage, all of the negative charges equals to the positive charges. So here, this is the PI, isoelectric point. After that, at this stage, this species, this will have more the negative charge than the positive charge. So negative charges are more here now. And after that, at this point, there is maximum of the negative charges. So, so this is how it looks like in this gradient. So this is actually the pH gradient. And after that, each protein has a characteristic PI depending on its amino acid composition. So this is one of the protein that has been shown. So different proteins will have different PI, and this isoelectric point of the protein will depend on the amino acid composition, and on the amino acid composition of the protein, the PI will be determined. And covalent modification like glycosylation, phosphorylation, they also affect the isoelectric point of proteins. So along with the amino acid composition, the post-translation modification like glycosylation and phosphorylation, they also affect isoelectric point of the protein. Am I clear up till now? Yes, sir. Okay, and next is in an electric field, like this is being shown that this is at low pH, positive charges will be more, at high pH, negative charges will be more. And this is low pH. So if you can see, the positive charges are more here. Here, this is the deuterine, and
both have positive and negative charges. So the positive charges will move to this side, to the cathode, and this negative charges, they will move towards anode. And during the movement, a stage will come like this negative charge, they will come like here and they will stop there. These sort of charges will stop here because the isoelectric point will reach there and they will stop migrating because of the net charge. So there will be no net charge on them, so these species will stop here. Similarly, these species will stop here, and these species will stop here, and they will stop here. So at different position, these different molecules, they will stop because of their isoelectric point. So based on their isoelectric point, they will cease their movement within the pH gradient. So above its pi, the isoelectric point, a protein has net negative charge. So above its the pi, so they will have net negative charge. We already have talked about that, and migrating towards the anode. If you can see here, so above the pi, they will have a net negative charge, and so below the pi, so below the isoelectric point, the protein is positively charged, and they will migrate towards the cathode. So this is below the pi and the pi, so it will move towards the cathode because it will have positive charge. So let me check the chat. Okay, so the isoelectric focusing actually is an electrophoretic process in which the proteins are separated based on isoelectric points. So based on these isoelectric points of different species, like these different if they are different proteins or if they are different molecules, so based on their isoelectric points, if electrophoretic process is applied, so that separation of these species, they will be called as, the process will be called as isoelectric focusing. And regardless of the point of loading, like where is loaded, proteins are focused to seek their isoelectric point. So generally these molecules, they are gonna seek their isoelectric points, and they will seize their, and they will stop there actually in the electric field actually. And focusing on two stages. In the first stage, if you can see the diagram on the right side, the amino acid as deuterines, they are actually deuterines only, the amino group and carboxyl group, and they are drawn and assume natural side chain for easy understanding. So once we assume that they're the alkyl group that is neutral, so then an amino acid can be considered as a deuterine, because on the one side of the chiral carbon there will be amino group, on the other side of that will be a carboxyl group, and the pH is equal to acidic, the protons will be available with that, and this is H2N, and that is the other group, and that will be positive charge. Same if pH is neutral. So if pH is neutral, so both ions are zero, and there will be no net charge, and this stage will be a deuterine. When pH is alkaline, protons are missing, so that will be negatively charged, and that's it. Okay, so at the first stage, so focusing occurs in two stages. We are talking about actually isoelectric focusing, and this will occur in two stages. At stage first, the pH gradient is formed. So we need to make a pH gradient, and the gradient is established in polyacrylamide gel by carrier ampholytes or immobilized ampholytes. There are two types of ampholytes used in the gels, in the polyacrylamide gels, and either the ampholytes could be carrier or they would be immobilized. And the carrier ampholytes, they are small soluble molecules with both
positive and negative charge groups. So they are ampholytes, are like the zwitterines here. So these ampholytes, they are small, soluble, with both positive and negative charge groups. So these will be the carriers will be they can move, but contrary to this are immobilized. Immobilized are actually the ampholytes are actually immobilized with the gel actually. And in carrier ampholyte gel, the anode end of the gel contains phosphoric acid. So at the anode and the phosphoric acid will be zero, and the cathode there contains sodium hydroxide. So the cathode will contain sodium hydroxide while the anode will contain phosphoric acid. So and in this way the gradient will be created once the electric field is applied. And next is therefore the anode will have low pH while the cathode will have high pH, and the pH gradient will exist between anode and the cathode. Am I clear up till now? Yes, sir. Okay, who will explain? Khansa, ji. You raise your hand. इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो पीएच ग्रेडियंट फॉर्म करती है, और जो ग्रेडियंट है ये एस्टैब्लिश होता है पॉली असाइल अमाइड जेल के अंदर। इसकी फर्दर आगे से वो मतलब पॉली वो लाइट्स की आगे से 2 टाइप्स हैं, एक कैरियर है और एक इमोबिलाइज्ड है। जो कैरियर है ये इसमें जो है ना उसमें हमारे पास स्मॉल चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एनोड इसमें जेल एनोड एंड पे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होता है और कैथोड एंड पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। एनोड एंड जो होता है उसमें लो पीएच होती है जबकि कैथोड एंड पे हाई पीएच होती है। और सर इमोबिलाइज्ड जो होता है ना इमोबिलाइज्ड So simply कैरियर जो है वो मूव करेगा और इमोबिलाइज जो है वो मूव नहीं करेंगे। दोनों एम्फोलाइट्स ही होंगे। ग्रेट ग्रेट, ठीक हो गया। दुआ सर जी 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 प्लीज। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। सर आपने जो पोस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉरी बीच में पूछ रही हूँ। सर मैंने पूछना था कि आपने हमें कहा था कि पोस्टर बनाना है तो आप एक से ज्यादा दूसरे आर्टिकल के बारे से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो सर दोनों आर्टिकल के नेम जो है वो हम अपने उसमें टाइटल में मेंशन करेंगे या सिर्फ एक आर्टिकल का? नहीं, फिर टाइटल जेनेरिक रखे ना कि दोनों को कवर कर सके। टाइटल आपने खुद चेंज करना है फिर। ठीक है, थैंक यू सर। और सर रेफरेंसेस ऐड करने हैं हमने पोस्टर में? नहीं, रेफरेंसेस जो है होते हैं 2 या 3 रेफरेंसेस से ज्यादा ऐड ना करें उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दुआ इज देयर। फरीन खुरम, फरीन। यस सर। वालेकुम सलाम जी, आप एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इसको। सर मैं अभी आई। अच्छा चलो। अनाया इज देयर, अनाया जी। शफीक इज देयर, शफीक। यस सर। सर वो मैं पहले कर देता हूँ सर। एक क्वेश्चन आया था इसमें कि ये जो एनोड में लो पीएच है और कैथोड पे हाई पीएच है, सर ये जो ऊपर फॉस्फेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से है? हाँ एग्जैक्टली। सर बट इसकी समझ नहीं आई कि कैथोड पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो बेस की वजह से पीएच लो नहीं होनी चाहिए थी कैथोड पे? नहीं, पीएच तो हाई होगा ना। लाइक ये देखें, पीएच हाई नहीं होगा। पीएच लो पीएच जो है ना वो 1 2 3, तो उस वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना। तो पीएच लो मींस के ये सल्फ्यूरिक एसिड और HCl का पीएच लो होता है ना। ओके सर। और ठीक हाँ, है और हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चलिए, आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा इसको। ओके अगर सर। जी
ठीक है सर। सर इसमें आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग यानी हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे जो प्रोटीन को सेपरेशन करते हैं, उसके अंदर जो मेजर 2 स्टेप्स हैं वो उसमें इस तरह होता है कि हमें पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करना होता है इंटायर जेल के ऊपर। यूजुअली पॉलीक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं जिसके ऊपर पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। 2 डिफरेंट एम्फोलाइट्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। कैरियर एम्फोलाइट्स होते हैं, इमोबिलाइज्ड एम्फोलाइट्स होते हैं। जो कैरियर एम्फोलाइट्स होते हैं वो आइदर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या नेगेटिव चार्ज करेंगे, डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट बेस जहाँ पे वो प्लेस होंगे। और ये स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसके जो इमोबिलाइज्ड एम्फोलाइट्स होंगे वो क्या नाम है, फिक्स्ड होंगे ऑन द जेल और वो मूव नहीं करेंगे। तो जो कैरी एम्फोलाइट जेल होंगी उनमें जो एनोड के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड होगा जिसकी वजह से वहां पे पीएच लो होगी, और जो कैथोड होगा वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी जहाँ पे पीएच हाई होगा। तो ठीक हो गया। हाई पीएच से लो पीएच पे एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से एग्जैक्टली अच्छा ये जो एम्फोलाइट्स हैं ये डिलिबरेटली ऐड किए जाते हैं, और ये जब पहली दफ़ा ऐड हुए थे तो दिस वाज अ ब्रेक थ्रू के एम्फोलाइट्स को भी ऐड किया जा सकता है टू क्रिएट अ ग्रेडियंट। सो जिसकी वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोटीन्स को डिफरेंट लाइक स्पीशीज को। जी फातिमा, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस सर, मुझे पूछना था एम्फोलाइट जो है वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पोजीशन उस पे मैटर नहीं करती ना कि वो किस पोजीशन पे है जेल में। हाँ एग्जैक्टली हमने डिफरेंट पोजीशन पे रखे होंगे। हमने ऐड किया होगा लाइक एनोड में, एनोड के साथ फॉस्फोरिक एसिड को वहां पे ऐड किया होगा, कैथोड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये मूव करेंगे, ठीक है। सो दिस दे विल मूव, दिस स्पीशीज विल मूव, और ये फिर जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। आगे जाके इसकी डिटेल्स हैं, डोंट यू वरी। ओके सर। ठीक है। सो okay, and that was the first stage to create the pH gradient. कि pH gradient को create किया जाए, एक जो है वो negative charged pole है and the second one is the positive charged pole. So now the gradient has been created. And next is the second stage is the protein begin their migration towards the anode if their net charge is negative, or towards the cathode if their negative charge is positive. सो प्रोटीन ने अब क्या करना है, प्रोटीन लोडिंग होगी और उसने प्रोटीन ने माइग्रेशन शुरू कर देनी है। तो अगर नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा प्रोटीन पे, सो दैट विल मूव, द प्रोटीन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। इससे पहले हम देख चुके थे कि एसडीएस को साथ ट्रीट करने से वो जो लाइक पूरी प्रोटीन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। एंड सिमिलरली इफ दैट इज पॉजिटिव चार्ज, so that will move towards cathode. And the rate of migration is faster when the protein is far from its pi due to the charge difference. So अगर ये pi से इससे दूर है, so ये faster move करेगा। Like अगर हम यहाँ पे देख लें किसी प्रोटीन की जो है वो pi यहाँ पे है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसका यहाँ पे है और वो यहाँ पे मौजूद है, so it will move faster to reach here, and same is with this case, it will move faster to reach here, ठीक है। और अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसकी माइग्रेशन जो है वो स्लो होगी to reach here, ठीक है, because the more the charge concentration, the more will be the movement. And after that is okay, so the rate of migration will be slower when the protein is near to its pi, that is less charge difference. Charge difference जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, so उतनी movement slow होगी. And when a protein reaches its isoelectric point in the pH gradient, it carries a net charge of 0 and will stop migrating. And next is what are actually carrier ampholites in detail. So carrier ampholites are small molecules. They could be 300 to 3000 daltons. We are not talking about kilodalton. They are in daltons. Like we can say that 0.3 to 3 kilodalton molecule. And normal proteins like normal proteins are
30 kilodalton or more than 30 kilodalton, but they are a very small molecule, like 0.3 to 3 kilodaltons actually. And amphoteric compound, so they are smaller than proteins actually. And amphoteric compounds, they are acidic and basic, with acidic and basic groups, and float around the gel to make gradient. So, so as the name indicates, they are carriers, so they will float. So they are small, they are amphoteric, containing both acidic and basic groups. They float around the gel to make the gradient. Complex mixture, that is hundreds are in number, so we have different, a mixture of these ampholytes actually, each with different PI. So at different PI, they will stop actually. Commercially available, like there are some example, ampholine, biolite, etc. They are commercially available carrier ampholytes. And when voltage is applied to a mixture of carrier ampholytes with highest PI, most positive charged, move toward the cathode. So they will move toward the cathode. And ampholytes with the lowest PI, and that has most negative charge, they will move towards the anode. So other ampholytes align themselves between the two extremes according to their PIs. So the extremes, the highest PI, they will have most positive charge. So they will move towards the okay. So they will move towards the cathode, and the lowest PI, that will move towards the anode. So and other ampholytes will align themselves on this gradient based on their PIs, their corresponding PIs. And the result is a continuous pH gradient. If we have different ampholytes, so there will be a continuous pH gradient, and they based on their PI. So different PIs will be there based on different species, the different ampholyte species actually. And so that was carrier ampholytes. So carrier ampholytes have few properties. That means small, amphoteric, floating. Examples are there, and they create continuous pH gradient if they are a mixture of ampholytes. And immobilized ampholytes, on the other hand, they are covalently bound to the gel. They are not floating around. They will not float. They are bound to the gel. And carrier ampholytes, cathode drifting occurs, which is countered in this case. So no gradient drift, because the positive charge, they will move to the cathode, and carrier and cathode drifting could occur. So in order to avoid this, the immobilized ampholytes can be used, and there will be no gradient drift. And pH, so that is a continuous supply of the gradient. And pH gradient changes over time, that is more than 3 hours. If using carrier ampholytes, cathodic drift could occur, flattening of gradient in neutral region. So in neutral region, so all of the gradient will occur in the neutral region, so that could occur in the carrier ampholytes. So well-defined chemicals give better reproducibility and control of pH gradient. So ultra-flat pH gradients can easily be prepared down to 0.01 pH unit per centimeter. So for better resolution, so ultra-flat gradient, pH gradient. So if we have more changes in the pH, in the peaks of the pH. So if I could draw it, so if we have like pH change, so it could occur like this one. But if we have a pH, like if this is a pH like this, and the graph is like this, so that is, this region will be like ultra flat pH gradient. So and here the protein can be resolved better in this region.
and can be linear or non-linear pH gradient. And next to it is, so these are immobilized ampholites, some example of immobilized ampholites. So the reds and the R shows weakly acidic or basic buffering groups. And this is, if you can see it like here, acidic acrylamido buffers. And there are multiple examples of them. So this one is 2-acrylamido, so 2-acrylamido 2-methyl propane sulfonic acid. So if you can see, this is if you have are done with the nomenclature, this is 2, 1, 2, and this one is 2-acrylamido. And this is acrylamido group. So this is 2-acrylamido 2-methyl propane 2-methyl and propane sulfonic acid, and this is propane actually. So propane sulfonic acid, and here if you can see 2-acrylamido glycolic acid, here N-acryloglycine, 4-acrylamido butyric acid. So this is butyric acid, and at the fourth carbon the acrylamido is there. And here there are some other examples. So these are acidic acrylamido buffers. So they are acidic. There are some basic acrylamido buffers. So this is 2-morpholino ethyl acrylamide. So, and there are some other examples of them. So there are a list of, and this is the pK value will be from 6 to, and that would be greater than 12. And here the pK value will be like 1.2 to 4.6. So they are acidic pH with acidic, and they are like basic. So there are certain examples of these immobilized ampholites, and they are actually immobilized. These groups are actually immobilized with the acrylamide gel actually. So they are covalently linked with the acrylamido buffers. So they are linked with the acrylamide gels actually, and they are immobilized ampholites. And these reagents with different groups become part of the isoelectric focusing gel. So they are become part of the gel then. So mixture of different amounts of amine and carboxylic groups result in different pH environment. So if you can see, there are amino group, carboxyl group, amino group, carboxyl group. So carboxylic acid groups and amino groups are there, and they are permanent part of the isoelectric focusing gel actually. And next is this is linear versus non-linear gradient. So this is actually a linear gradient. This continuously changes, and if you can see at pH 4, these group of proteins, they resolve on the protein, and this is the cathode, and that is the anode, and this move in the direction. So that is, and these proteins are negatively charged, so that move from the cathode towards the anode, and the smaller the molecule, and the faster the movement will be, and if the charge is applied. So if you can see these two molecules, those will be resolved like this at pH 5, and at pH 6 they will resolve like here from this pH to this pH. So they can resolve like here. So if you can check it like here. Okay, so we will check like we will check it here and check this later on. Okay, so so they can be resolved on the gel, and here they can resolve here, and this can resolve here. Okay, and next to it is this was linear, and this is the non-linear. In non-linear, the same separation will occur, but the resolution will be better. Here you can see these three molecules, they are grouped together, but they are resolved here. They are separate from one another. So this is linear pH gradient over the whole pH range.
So this is linear pH range, and this is the increased resolution between pH 5 to 7. So this is pH 5 to 7 with the non-linear pH gradient. So this is like the resolution will be improved with this non-linear gradient. And okay, so a broad pH range, they allow separation of most protein mixture from prokaryotic to eukaryotic sources. So if we have proteins from different sources, go for broad range of pH, like from starting from the pH 3 to pH 10. Like we have proteins from prokaryotic and eukaryotic sources in a mixture, and we want to separate them, so better to use broad range. And narrow pH range allows specific resolution of proteins with a known pI range, especially those that do not resolve well in broad range gel. So in broad range gel, if the proteins are not resolving better to go for a narrow range pH. So in narrow, we have different options like from 3 to 6, 4 to 7, 5 to 8, 7 to 10. And in the micro range, we have in the decimals, the range in decimals, you can see. And gel strips with non-linear pH ranges allow a more even distribution of proteins along the length of the gel to maximize resolution. So non-linear gels can be used, and we have seen before that it improves the resolution and the distribution of the protein along the length of the gel. And I think it's done up to now. And who will explain? Okay, who will explain this thing like this before? Who will explain this? Kalimullah. जी. So कलीमुल्लाह आप explain करें इसको, इस slide को. I want to know, okay, like where we are. आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, Fareen is there now. Fareen? Yes, sir. जी. बताएं इस slide पे. सर इसमें एम्फोलाइट्स के बारे में बताया जो इमोबिलाइज होती है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होती है जेल के साथ, वो फ्लोट नहीं करते. और फिर सर इसके बाद बताया कि कैथोड ड्रिफ्टिंग होती है जिसके अंदर जो कैरियर इम्फोलाइट्स होते हैं. और सर पीएच ग्रेडियंट के बारे में बताया कि ओवर टाइम जो है चेंज होती रहती है. और सर वेल डिफाइंड कैंपस. और सर पीएच ग्रेडियंट्स कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड डाउन टू 0.01 pH. और सर इसमें हमें भी बेटर रेजोल्यूशन मिल जाएगी. और सर उसमें लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बताया, और भी वो हमने देखा है कि आगे जो नॉन लीनियर होते हैं ना सर, उसमें विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक हो गया, ठीक है. और यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पे बताया हुआ कि मिक्सचर है अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का, जिसकी वजह से डिफरेंट पीएच एनवायरनमेंट्स क्रिएट. हाँ, और इसको हम कोवेलेंटली लिंक करते हैं विद द जेल. ये ब्लू कलर लाइंस जो है ये हमें हमारे जेल को शो कर रहे हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल. ठीक है. और इसके साथ हमने कोवेलेंटली ये एम्फोलाइट्स जो है इसको कोवेलेंटली लिंक कर दिया है. Am I clear to the class? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया. और जो कैरियर में होते हैं वो वहाँ पे ये लिंक नहीं होते, इस तरह कोवेलेंटली लिंक नहीं होते. वो दोनों इलेक्ट्रोड के साइड पे सिर्फ एम्फोलाइट्स को ऐड किए जाते हैं एंड दे मूव.
सो उस मूवमेंट की वजह से लाइक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो दिस इज मोर बेटर सॉल्यूशन फॉर दैट. ठीक हो गया. अच्छा, हमने जितना पढ़ लिया हुआ है, सो अप टिल हियर, अप टिल 45 स्लाइड. सो यहाँ तक जो है ये मिड में होगा, लाइक 2 lectures previous and this one, 2 topics previous 2 topics and this one. ठीक है. So that will be including the mid. I will do an email today inshallah for that as well. ठीक है. Any question, any point, any suggestion? सर ये जो इस मेथड में कभी ये चांसेस है कि प्रोटीन स्टक हो जाए इलेक्ट्रिक मीडियम के बिटवीन, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि पीएच ग्रेडियंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हाई लो पीएच से हाई पॉजिटिव की तरफ, हाई पीएच की तरफ. तो पहले ये हो सकता है कि पीएच पॉजिटिव चार्ज हो और वो कैथोड की तरफ मूव कर रही हो, एंड देन वहां पे जब वहां पे पहुंचे तो पीएच का ग्रेडियंट चेंज हो, वहां पे जाकर वो नेगेटिव चार्ज हो तो वो वापस आ जाए. इस तरह होता है सर? नहीं, बेसिकली ये होता है चार्ज के बेस पे ये मूव कर रहे होते हैं. तो जहां पे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, या वहां पे रुक जाते हैं. ओके सर. हाँ, ये वहां पे रुक जाते हैं. और इस तरह नहीं होता कि यहाँ पे चार्ज इस पे चेंज होते जाते हैं. यहाँ पे लाइक वहां पे जहाँ पे पहुंचते जाते हैं तो चार्ज तो यहाँ पे, इससे पहले अगर हम देख लें, वेट फॉर अ व्हाइल. Where was our, I think it was our first slide, this one. So ये जब यहाँ पे इससे इस तरह मूव करेगा ना, सो ये चार्ज डिफरेंट होंगे इस पे ना. तो जब ये स्टेटस आएगा तो ये यहाँ पे रुक जाना है, मीन्स कि इसने मूव करना है और चार्ज डिफरेंस आएगा इस पे तो ही मूव करेगा. ओके सर. ठीक है.